Let's get started for today. Let me share my screen. Perfect. Update on 50K deal. Let me check. Let me check. Let me check what's the update. If I got an email or not. No, not yet. Agent hasn't sent the email yet. She does around this time actually, so hopefully we will know for sure today. I see no agent's email actually, other than the document one. Yeah, there's no email, unfortunately, Hamad. Probably something final will happen today. There's one more investor that we are talking to. He showed interest, so I'm gonna send him in today. Um, Give him a lockbox code, and then he will go in and check. So let's see. Okay, 1 second. Okay. Let's say someone else. DM. DM and Brian's update. Sure, I'll check the Brian's update. Will we do update on Brian? Please type the answer. So update on Brian was this that in Ohio State there's a law that's passed recently that we have to tell them if you're wholesaling them, okay? Which means that if you're selling someone else property ahead, we have to declare that. So when Brian sent me things, I didn't see what's it called? Ohio disclosure form wholesale, something like that right here. So this is basically the form we have to fill it before anything. So we have to let the people know in Ohio. Yeah, so we just have to send them this form and get it. Let them know that we might be reselling it, and then he will let us know. He will return back to us. So that's one of the restrictions that we have in Ohio, that we have to do like Ohio disclosure. जिस तरह सेलर का डिस्क्लोजर होता है ना कि सेलर बताता है आपको कि आप सब काम घर में कैसे है, तो उस तरह बायर का भी डिस्क्लोजर होता है जिसमें इस स्टेट में कि आपको बताना होता है कि अगर आप आगे सेल करोगे या नहीं, या खुद बाय कर रहे हो. So we're just waiting for this disclosure form. Now does that mean sometimes people sometimes लोग बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे, that happen, but sometimes they're like yeah we don't care, अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं मेरी, then sure, no problem. It's getting harder to pay without having a deal. I'm confident I will sure find a deal and let you know. Sure man, no problem. Start reading from this reply. And then big portfolio.
Start reading from this reply. Give me 1 second, guys. You gotta figure this out. Is there any other thing we can do? I'll be able to pay. Is there any other thing I can do so I'll be able to pay the fee? Um, is there anything else? What do you mean in terms of like outside of real estate? You mean, or like does that mean working in the company? I'm not sure. We only have two people that actually works right now. So, but I can ask. Maybe what we can do, we can give you a task and sort of see what we can do with it. I will check with the team and let you know. What else do you have? Big portfolio and number one seller has a big problem. Check it. Seller has a big problem, a big portfolio. Check it on. Don't tell me what we can do. Do tell me what we can do. Okay, let's see. Um, okay, let me share the screen on the portfolio here. Okay, yeah, so it is a big portfolio, no doubt. Um, Maybe it's a group, it's like a company that's selling their portfolio in Cleveland. Cleveland, it's all Cleveland. Lima, okay, Lima as well. Okay, basically, off market, on market, on market, on market, on market. Yeah, I mean, basically, Heather, all you have to do is go to them and tell them I want to sell finance, and put all the properties. For example, I would say take all the occupied property. Take all the occupied property and tell them these are the property I want to make a deal with. Um, it says temporary occupied, so don't take that, but take all the occupied property. Now imagine, guys, how many they have about. So that's about, I don't know how many there are. So 74, about 60. So they have, so look at this issue, right? इसमें बहुत ज़्यादा आपको सीखने की ज़रूरत है. जैसे अगर आप फ्यूचर में इन्वेस्टिंग वगैरह की तरफ जाते हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, राइट. एक सिंपल रूल है कि बाय 5 हाउसेस, ठीक है. जब 5 आप ख़रीद लो तो उन पाँचों को सेल करके बाय 1 बिग हाउसेस, ठीक है. दैट्स यूजुअली द रूल, बिकॉज आप इतनी ज़्यादा नहीं, 5 से 6 हाउसों को इतनी आराम से नहीं मैनेज कर सकते. 5 भी मुश्किल होते हैं मैनेज करना, बट क्योंकि हर हाउस का अपना बिजनेस है, हर हाउस एक बिजनेस है, ठीक है. तो आपके पास 5 बिजनेस है, पाँचों को आपको ग्रो करना है और फिर उसको मेक श्योर करना है कि वो ब्लीड ना हो, रेंट हो जाए, फलाना ढमकाना. अब ये आई डोंट नो कि ये कंपनी है या सिंगल पर्सन है. इसके पास अबाउट 60 और सो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है. 7 प्रॉपर्टीज़ हैं. इसका पोर्टफोलियो आधे से ज़्यादा वेकेंट है. तो इसका मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, इन सब में वो पैसे अपनी जेब से दे रहा है. एंड ही इज़ लूजिंग अ बिग टाइम, अ बिग टाइम, राइट. इमेजिन कितनी प्रॉपर्टी टैक्सेस वो पे कर रहा है, इंश्योरेंस पे कर रहा है यहाँ पे, और कितनी लॉस में है, राइट. सो अगेन, जब आप इन्वेस्टिंग में है तो मेक श्योर करना कि मैं 5 से ज़्यादा या 6, चलो हो गई तो हो गई, बट उन 6 को बेच के
फिर आप एक मल्टी यूनिट लो, बड़ी बिल्डिंग, 1 मिलियन की, 1.5 मिलियन की, उन 4-5 हाउस के पैसों से, एंड देन मूव फॉरवर्ड। बिकॉज अगर आप इस तरह करोगे, just very hard, very very hard to but anyways, coming back to the topics, इसमें करना हमने ये है कि बेसिकली जो ऑक्यूपाइड है ना, सिर्फ उनकी वैल्यू है एज अ कमर्शियल पोर्टफोलियो। ठीक है, ठीक है, ये है मल्टी यूनिट, बट टेक्निकली एज अ ओवरऑल इट्स अ कमर्शियल पोर्टफोलियो। सो वट एवर इज ऑक्यूपाइड, take that, make a list, make a seller finance offer and give it to them, right? आप नंबर इसके लिस्टेड और आस्किंग, राइट, आस्किंग आप उसको जो दे मांग रहा है दे दो। इसमें उसने इसको छोड़ देना, खैर जितनी ऑक्यूपाइड है सबकी उसने लिस्टिंग दी हुई है, ठीक है। तो वो जो बोलता है उस पर आप उसके सारे उतने पैसे दे दो, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू इज़ so these are occupied, so if they're occupied it shows the rent as well, okay। तो आपको रेंट भी पता चल गया, आपको प्राइस पॉइंट भी पता चल गया, डाउन पेमेंट आपको पता है, इंटरेस्ट का आपको पता है, एंड मंथली पेमेंट्स आप निकाल लेंगे। बट आई विल गो विद जस्ट द occupied one, just the occupied one। Make this, because it's a different city, तो लीमा का आप डिफरेंट बनाना, लीमा का आप डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना, एंड क्लीवलैंड का डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगेन remember that we have to do a disclosure agreement, right? That's what some attorney told me, that they pass a new law. Arrange this using AI. Oh, you arrange this using AI? Nice. Yeah, if you arrange it, then it looks good. Yeah, so only occupied, give them an offer, seller finance, and tell them these are the property, put it in will send it away. You have everything that you need. Property and property tax and insurance, you can get it online. I guess we would need property tax and insurance. You might not, because some are occupied, past occupied. या तो आपको पूछना पड़ेगा, आप या उसको आप सेंड को, उसको बोलो कि आई विल चार्ज यू बट आई विल फिक्स द योर पोर्टफोलियो, I fix your portfolio, so give me X amount of money. So everything is good, Heather, in this. It just, you have to make sure that oh, the other problem is they are not all three beds either. They're not all three beds either. Yeah, something like this, a 14 building unit would be a good, right? Because it's occupied. Hero Homes, JV2. Yeah, I think what you should do, in my opinion, I think 3 bedroom occupied, take those, and then take these commercial too, and then send over. No, I'm just saying as a joke कि एजेंट को ये शीट भेजो, उसको बोलो कि मैंने इसको फिक्स कर दिया, if you need it let me know, I'll charge you I don't know, some money. For occupied mostly have 1%. Yeah, I see that, and plus it has, some of them has even more than 1%. So if you look at it, this is 1.2, this is 1.3 almost. But yeah, so get 3 bedroom, all the 3 bedroom, number one, get all the rent, and just run the numbers, and then do separately commercial ones, and run the numbers on that. Okay, there's 2 commercial, looks like both are occupied. 3 commercial, one is fully occupied and one is just occupied. The problem is off market, हम कैसे निकाल सकते हैं इनकी
वैल्यूएशन, राइट। ये एक बड़ा मसला आता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी ऑफ मार्केट है तो उसकी वैल्यूएशन कैसे निकालें। पर अगर हम सेल्फ फाइनेंस दे रहे हैं तो हम उसकी वैल्यूएशन ओके करते हैं, बट इन रिटर्न हमको पेमेंट्स प्लान चाहिए होता है। तो दैट्स वेयर द ट्रेड ऑफ इज, राइट। अगर हमें नहीं भी पता, राइट, अगर ये एक 1.3 मिलियन नहीं भी है तो हमें टेक्निकली उसको बेनिफिट देने के लिए नहीं पड़ेगी। और ऐसा हो भी सकता है कि हम 8 साल में जाके फंस जाएं कि भाई प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.3 नहीं थी या प्रॉपर्टी की वैल्यू 800,000 थी, सेलर ने बहुत बताई है, राइट। दैट कुड बी पॉसिबिलिटी, बट उसको हम फिर एट दैट टाइम डील करेंगे। उसको सेलर को बोलेंगे भाई हमारे पास कोई और चारा है नहीं, वी हैव टू वेट फॉर 2 more years। तो इससे फिर हम 2 साल का एक्सटेंशन और ले लेंगे ताकि इन 2 साल में थोड़ी और बढ़ जाए प्रॉपर्टी की प्राइस, और जितना हम पैसे पे कर रहे हैं मंथली वो भी बढ़ जाएंगे। सो आई थिंक यू शुड, दैट्स व्हाट वी शुड डू हियर। Lehman is all off. Yeah, so it's good. Take a chunk of this portfolio and focus on that, and then move on to the next one, right? Um, yeah, उसको बोल देना we are a group of investors because we will need, because it's Ohio, we will need a resell disclosure form। बस उसको बातों में बोल देना, ऐसे इसको मतलब हिला के नहीं बताना। Say it in the talk. These are all occupied. Sheet 2 for all occupied, yeah. This is Cleveland, multi-unit Ohio anymore, yeah. Combine this is 672,000. How? These two are more than 600. But yeah, go for it. Check this on market. Let me see, actually check this. How long has it been listed? I feel like in property में काम भी होगा. I can see here. Let me show you. इन प्रॉपर्टीज़ में हमें ये भी देखना होगा कि काम होगा, बट क्योंकि हम सेल्फ फाइनेंस पे फोकस कर रहे हैं देन वी शुडंट हैव अ इशू। प्लस वी ऑक्यूपाइड पे फोकस कर रहे हैं तो वी कैन डू डिफर मेंटेनेंस, राइट। Just by looking at this image I feel like the windows needs to be changed on this, right? Windows needs to be changed completely. So if it's this window needs to be changed, or this, and probably others too. This deck, I don't know, it's gonna fall in like 10 minutes. This house feels like. I mean, the surrounding is fine. Surrounding is fine. Look at this house facing the wrong way. Okay, yeah, the surrounding is fine. Just yeah, just go with because देखिए हम सिर्फ रेंटर का फोकस करें, टेनेंट ऑक्यूपाइड, तो हमें रिहैब का तरह मसला नहीं है अभी, ठीक है। दूसरी हम फोकस करें 1% रूल से ज़्यादा वाला, तो वो एक मसला नहीं। तीसरी हम फोकस कर रहे हैं 3 बेडरूम वाले, तो हमें उसका भी इतना मसला नहीं है। तो हम बेसिकली टॉप ऑफ द टॉप प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं ताकि हमें रिहैब का, हो सकता है रिहैब होगा बट एट दैट टाइम वी डोंट हैव एन इशू। Tenant occupied Cleveland 11 15 um, all tenant occupied properties are updated with the rent ready. Okay, okay, exactly. See, अगर टेनेंट को अंदर डालना है आपने तो प्रॉपर्टी को फिक्स करना लाजमी होता है, राइट। अनलेस कि टेनेंट 10 साल से एक ही जगह रह रहा है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। तो उन्होंने फिक्स करी होगी, सो उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। हमें सेल्फ फाइनेंस करनी है, अगर सब कुछ ठीक है तो 0.7 वाला देखना है, ठीक है, एंड वी गो फ्रॉम देयर। Okay, let's see the DM image. Here's a service issue on my end. Please check the DM.
Yeah, I haven't seen you in a very long day, very long time, Eamon. Hope you did well. Um, Service issue on my end. Please check DM. Yes, I will check DM. Um, Harry said hi. John replied, I sent you the screenshot. Okay, yeah. Let's take a look at Harry, and then I'll go to Eamon. Okay, so this is what John said. जॉन ने जो नंबर भेजे थे हमने उस पर इतना बोला था कि भाई आपका जो एमोटाइजेशन है वो बहुत छोटी है, उससे रेंटर मेक सेंस नहीं करेगा, हमें अपनी जेब से पैसे डालने पड़ेंगे हर महीने आपको पे करने के लिए. Then he said this, I completely understand your concern. A 15-year amortization does create a higher monthly payment, and I agree the rental income needs to be make sense for the numbers to work. Let me know what terms or structure would work better for you. I appreciate your honesty and looking forward to. I think he wrote it with ChatGPT. I can tell. I appreciate your honesty and all that. Plus, he's Chinese. His English is is tough to understand on the call. Okay. Um, so that being said, we need to tell him something. We need to tell him something. Harry, which property was that? I need to run numbers on that. I forgot. John sent me the email, but I don't think he CC'd me. So he just sent you the email. Yeah, he can communicate in Chinese. If you know how to speak in Chinese, yeah, you will be buddies with him. So let me find out what two properties. Gmail numbers on the property. There's one on Corona. Okay. So this one, again, I've been talking to him for a very long time. The problem is the seller wants to sell, but he don't wanna give me different terms that I want. हैरी, आर यू श्योर कि वो उसने इस प्रॉपर्टी पे नंबर का बोला है, या वो जो हमने इसको बाकी की दो दी थी उस पे बोला है, जो जिसमें से एक ये है, इस 1.89 की लगी हुई है. दिस इज़ लाइक, अगर हमें सेल्फ से मिलती है तो आई थिंक, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा, लाइक न्यूयॉर्क, आपने हर जगह सुना होगा, न्यूयॉर्क 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 एक बहुत ज़्यादा डिमांड जगह पे, राइट. टेक्निकली ये ऐसी चीज़ है, अगर न्यूयॉर्क में आपको मिलता है, सेल्फ फाइनेंस करवा देता है, तो टेक्निकली यू शुड बाय इट, नॉट समवन एल्स. ठीक है, ये इस टाइप की डील होगी, बट अगेन इसको कन्विंसिंग में भी टाइम लगेगा. Yeah, so this is one of the property that I'm in chat with him. I have the numbers of that as well.
104 and 104, and there is one more property at Corona. Okay, let me quickly show you guys what I am looking at right now. So whenever कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें मेरी अच्छी बातचीत चल रही है, यूजुअली सारी प्रॉपर्टी, बट क्योंकि इधर एक महीने में आप तक 300-400 की आप ऑफर्स कर देते, तो यू डोंट रिमेम्बर, इट्स गोना बी टू मच, राइट? तो यूजुअली जिस पे अच्छी ऑफर चल रही है, आई डेफिनेटली डू टू थिंग्स, राइट? एक तो मैं ऐसे खोल लेता हूँ नंबर्स ऑन अ प्रॉपर्टी जिसमें सारे नंबर सेव होते हैं, ठीक है? मैंने उसका एड्रेस लिखा है और एड्रेस आ जाता है सामने। दूसरी ये कि उसके नंबर आप सेव कर लो कि आपने क्या ऑफ़र दी थी, ताकि आपको पता हो किस कैश एंड कैश पे, ठीक है? तो ये कोरोना, दिस इज़ द सेकंड प्रॉपर्टी, लेट मी ब्रिंग दैट अप. It's currently off market, but whatever, 1.7 estimate बता रहा है, इसने मांगी हमसे थी 3.44 समथिंग, ठीक है? तो हमने इसको दो ऑफ़र देनी है, एक ये ऑफ़र है कोरोना वाली, कोरोना वाली दिस, कि हम उसको $780,000 पे करेंगे, ठीक है? मंथली पेमेंट और स्ट्रक्चर, तो बेसिकली 3.9 की लगी हुई होगी, 780 की हम उसको पे करेंगे। सेलर जो हमें 310 का 3.1 मिलियन की हमें लोन देगा बेसिकली 10 साल में, और हम 1,400 इसको पे करेंगे। ये सेकंड पोजीशन वाली है, तो वो उस तरह का है। दूसरा ये है कि अगर फर्स्ट पोजीशन में है तो ज़ाहिर है हमारा लोन, हमारा जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेट मी इंक्रीज दैट टू 5. So 10% down there, expenses 0%, 10% management. So yeah, so here it's going to be 3,000. Okay, so Harry, I will send you a screenshot of this. Um, take this and run the numbers on this property. You don't have to run it. Basically, you have to let him know. Okay, you just have to let him know. The other thing, guys, I got 2 emails yesterday. आपको कैलकुलेटर यूज़ करना था। अगर आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कैलकुलेटर को कॉपी करें, ठीक है? आप एडिट की रिक्वेस्ट ना भेजें, ठीक है? मैं आपको एडिट की रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो ओरिजिनल कैलकुलेटर में इश्यू हो जाएगा। तो आप उसको कॉपी करें और कॉपी करके एक नई खोलें, तो वो कॉपी हो जाएगी और आपका बन जाएगा। जस्ट मेक श्योर दैट यू आर नॉट सेंडिंग द एडिट रिक्वेस्ट्स. Harry, I'm just sending you a quick screenshot. Um, so on the same property, I'm sending you 2 screenshots. Okay, so that means this is what we're gonna offer him on that. तो उसको आपने अपने लफ्ज़ों में डाल के उसको भेज देना है. ओके, सो फर्स्ट वन जो मैंने आपको भेजी है वो सेकंड पोजीशन है, और सेकंड वाली जो भेजी है वो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है? और मैंने एक ही प्रॉपर्टी के नंबर दिए, तो सेंड दीज नंबर फॉर वन प्रॉपर्टी, उस पर जो रिस्पॉन्स आता है वी विल गो फ्रॉम देयर. ओके,
टेक्निकली मेरे पास दोनों के नंबर हैं बट लेट्स गो विद वन ताकि हम उसको टेस्ट कर पाएँ कि वो क्या चाहता है. Okay, so here is good. Let me see Evan. I hope Evan is here. Can't see her. Okay, let me see Evan. Any update on the Chris? Oh, my screen is not sharing. Give me 1 second, guys. Heather, how are you finding this portfolio, by the way? Okay. But he's waiting for a call. Sure, I'll call Hussein. I'll call him, don't worry. Let's see. Even okay, so this one 25,000 down. We spoke to the owner. He's not approved to us for this property for lending due to the debt income ratio. The next best option for us to, yeah. Okay, update on Chris. This is Christopher, yeah. But should get it by today. Okay, so that's that. Then there's so many messages, guys. 20, the same one. So this house, okay. Chris, I can't present an email. I need a formal offer letter. Disclosure fund, the the only agent you will ever need. Christopher. Um, what is that? Hi Thomas, hope you're doing well. I would like to submit an offer at this. Uh, we, we have some portion on the offer. Please call me at this number. Thomas, okay. Um, probably it's better to leave it days and asking for 99. We're offering 60 for this. Please let me know if the seller would look forward to it. Okay, it's Missouri 5601 West. 5601 West. Missouri Avenue. Oh, it's a unit number 161. Yeah, so we can't unfortunately because this one is an apartment building and it has a unit number of 161. Yeah. Um, is it unit number? Wow, it looks like such a Spanish style home. That's exactly how Spain homes are like. Yeah, so Eamon, if you see this, um, there's a swimming pool, there's a post office or post box,
That means there's many people living in there, right? And this is just um, one number 161. जब भी आपके पास आ जाए ना इस तरह का नंबर 161 at the end of the address, इसका मतलब ये यूनिट की बात कर रहा है. It's a unit. It's a unit. So probably not going to be the great fit. It probably will have HOA. I can guarantee that. So this is the house. This whole building is theirs. They're selling one part. So might not be the best fit for this one. I'm just gonna reply to you in the chat. This is not a single family house. It's a unit, which means that it's a part of a bigger building or apartment building or a complex. Hence why we will not be able to do this deal. You'd have to just move forward from this one. Guys, make sure कि जब आप कर रहे हैं ना तो आपके ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, प्रॉपर्टी टाइप में अगर आपने टाउन हाउस लिखे हुए हैं या लॉट्स, आपको उस तरह के घर मिलेंगे जिसमें अपार्टमेंट्स हैं सेल पे लगे हुए वो सब. बट आपने ये नहीं करना है. आपने बस 3 बेडरूम एनी बास प्रॉपर्टी टाइप. हम यूजुअली हाउसेस और मल्टी फैमिली कर रहे हैं. एक वक्त था कि जब कॉन्डोज भी बहुत ज़्यादा सेल होते थे. इसी तरह जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि कॉन्डोज को नहीं लाने का, उस वक्त हम ये बात करते हैं कॉन्डोज को भी लाओ. तब थी सेलर्स मार्केट. अब बायर्स मार्केट है. सो इट्स डिफरेंट सिनेरियो. तो हर मार्केट के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ता है. हर स्ट्रेटजी जो हमारी सेलिंग की होती है या बाइंग की होती है वो हमें चेंज करनी पड़ती है. तो जब हम सेलर मार्केट में जाएंगे तो उसके एक अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो वो अलग तरीके से देखना होता है. Let's see. Yeah, so this house is condo. This is good. I'm just not sure what happened. Update on the Chris. I did the exact same thing. As soon as the 150 offer, he got upset. I did the exact same thing. As soon as I gave 150 offer, $150,000 on this offer, he got upset. Then I explained that we would do the seller financing and that we are willing to pay 10% above the asking price. I'll take it to the seller and get back to you. If you haven't heard from me by Wednesday, reach out again. Okay, will they reach out again on this property? Okay, let me call this number because इसको हमने सेलर फाइनेंस के ऑफर दिए और वो गुस्से में मतलब कैश दी उसको गुस्सा आ गया था. एंड देन ही सेड दैट आज क्या है, वेंसडे आज. आज थर्सडे. So guys, I'm getting messages. Maybe something important. Let me see. Yes, I will check. One oh eight three. Hey Chris, Michael, hope you're doing well. Just wanted to check in
with you on the offer that was sent on the seller financing term 10% over asking. Have you had a chance to speak to the seller yet? Question mark. Okay. Sent a message. Okay. Okay. Z. I'm just gonna not. It's Benish, I think. I'm gonna have a look at the images that you just sent quickly. Looks like a mobile home, man. I don't think there's um issue with the house. Just bad shape. ओके ये प्रॉपर्टी देख लें उसको ऑफर कर सकते हैं हाउस कंडीशन। आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस क्या है इसका? Send me the property address, Benish, so I can check. I guess it's here. One second. I feel like it's a mobile home. Please don't be a mobile home. Good purchase to someone durable. Look at this, the company name. It said Texas Mobile Home Buyers. It's a mobile home, I think. Yeah, it's APT, apartment 504. Yeah, so it's a mobile home number one. So that's a problematic thing because आप उसका land own नहीं करते. It's in a good place, but आप इसका land own नहीं करते. It's a mobile home. A great opportunity for someone looking for affordable double wide to move onto their land. Yeah, so Benish, you have to when you're doing a search, you have to make sure कि आप for sale पे हो, ठीक है? प्राइस डजेंट मैटर, दोनों कैश ऑफर अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी टाइप पे आप मल्टी फैमिली हो और हाउसेस हो, ठीक है? अगर आपकी और लॉट्स एंड लैंड्स अपार्टमेंट्स और कॉन्डोज आ गए तो फिर इस टाइप के हाउसेस आपको भी दिखेंगे जिस टाइप के अभी हमने देखा है, ठीक है? वो सिर्फ लैंड, वो जो $27,000 का जो घर है वो सिर्फ घर है, ठीक है, ऊपर का घर, और लैंड वो ओन नहीं करता। तो लैंड पे आपको आप लैंड पे होगे तो उसको आपको रेंट देना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। तो आप नहीं बन सकते वो लैंडलॉर्ड, आप सिर्फ घर ओन कर रहे हैं, ठीक है? और बाकी का जो लैंड है वो ओन बाय अ बिगर पार्क और समथिंग लाइक दैट। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। ओके, वी हैव टू फोकस, आपको फोकस करना है हाउसेस पे या मल्टी फैमिली पे। अगर आप इन चीज़ों में जा रहे हैं यू गोना फाइंड थिंग्स दैट्स नॉट गुड। ओके, या आई गॉट द एड्रेस, आई गॉट द एड्रेस, आपका एड्रेस मुझे मिल गया था, इस पे पिक्चर्स के ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी का। बट मसला ये कि ये मोबाइल होम है, ये घर ज़मीन पे तो है बट ज़मीन आपकी नहीं है, किसी और की ज़मीन है, वो सिर्फ घर ऊपर का बेच रहा है, राइट? उसमें कोई वैल्यू नहीं है।
घर की अगर घर में कोई रिपेयर आता है या घर ख़राब होता है, देन आप उसको बेच नहीं सकते, नंबर वन। सेकंड, लैंडलॉर्ड का तब दिल चाहे वो आपको हटा सकता है। अगेन तब नहीं होता, बट फॉर एग्जांपल 1 साल की लीज़ है, ठीक है, 1 साल ख़त्म हुआ, वो बोलता है नहीं अब आप चले जाओ, मैं आपको दोबारा अपना लैंड नहीं दूंगा, तो आप फंस जाओगे, आपको पूरा घर समेत हटाना पड़ेगा। आ, तो प्लस, और ये घर मूव हो जाते हैं तो फिर आपको तब बड़ा ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, वो आएगा घर को पूरा उठाएगा और उसको मूव करेगा, ठीक है। फिर अब वो उसको रखना भी कहाँ है, ये भी मसला है, राइट। उसको आप कहीं बैकयार्ड में जाके नहीं रख सकता, वो उतनी बड़ी चीज़ है। ओके, सो अगेन फोकस ऑन फिल्टर्स, ओके गाइस। प्रॉपर्टी टाइप में हाउसेस एंड मल्टी फैमिली इज़ द ओनली थिंग वी आर वर्किंग ऑन। वी कैन नॉट वर्क ऑन दिस बिकॉज उसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी फ़िलहाल के लिए। Okay, let's go to, I think we have Hussein has been waiting for a while. Okay, so Arbor Green, Enterprise Sheet, and then Arbor Green. Let's open your image. Okay, so you ran the numbers on this. Enterprise Sheet, so ये पैसे इतने मांग रहे, इसका है 13 0 1025 10. Yeah, these look good, but the only issue is this, right? The cash and cash is not good. So go with go with cash on this. Hussein, can you unmute and let me know if you have sent the numbers for on enterprise? Hello. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Cheers, son. जी मैंने आपने कहा था कि इस पर हम रन करने हैं, तो मैंने इस पर नंबर रन कर दिए और ठीक वहाँ है, से कोड भी मुझे बार बार मैसेज कर रहा है कि ऊपर का क्या बना, मुझे ये रिस्पॉन्स नहीं दिया। ठीक है। तो नंबर से तो लग रहा है कि आई थिंक इट्स नॉट द ग्रेट डील, टू बी ऑनेस्ट। सेलर फाइनेंस की, ये अंडर ठीक है। प्राइस हाँ, सेलर फाइनेंस की, मगर कैश की हम कर सकते हैं, ठीक सही। है। आई थिंक उसने कहा था कि सेलर फाइनेंस के लिए ऑफर कर रहा है, कैश ऑफर मेरे ख्याल से नहीं चाहिए उसको। इसको नहीं चाहिए ऑफर सेलर फाइनेंस की। आप पूछ लें क्योंकि वो अभी आपकी कॉल का वेट कर रहा है, मैंने उसको कहा कि सही आपको आज कॉल करेगा। हाँ, मैं इसको कर लेता कॉल। व्हाट इज़ द ऑफर, दो हमने क्या ऑफर निकाली थी इंटरप्राइज में? काम था, अब मुझे याद नहीं कि कितना काम था हाँ उसमें। थोड़ा सा काम था। नहीं, आई थिंक नहीं था, नहीं सॉरी, नहीं था बिल्कुल भी। वो लॉरेन का था, वो मुझे लगा। इंटरप्राइज स्ट्रीट राइट हियर। हाँ, इसका आई थिंक 514 ऑलमोस्ट इसने फिक्स किया हुआ है घर। जी। um, yeah, let's call this guy. इंटरप्राइज का था, और आर्बर का आपने क्या सोचा है? 175 उसने कहा कि कह रहे कि कलर 90 पर डाल दिया, तो मेरे ख्याल से कस्ट ऑफ पर 90 सही है ठीक और है। ऑफ मार्केट पे रखा हुआ। आर्बर विथे ऑफ मार्केट था, और आई थिंक इसमें और थोड़ा ये जो थर्ड वन है, इसमें मैंने 190 टू 220 का कह रहा था, तो मैंने 2 लाख का 70% ऑफ लगाया, तो उसका 140 आया, तो मैंने न्यू ऑर्लियंस का। 140 के शो पर दिया है, तो आपको जो सेंड किया है। हाँ, लिस्टेड प्राइस 200,000, कैश ऑफर 140, rent is 1475, so it barely makes the 1% rule. Taxes, taxes 132 per year. नहीं, नहीं ये सुना। I think it's very low. It's might be per month, 132 per month होगा। Let me see.
जो application थी उसको करी है। ये आपको कहाँ से मिला था टैक्सेस? ये आपने मुझे जो मैंने जो मैसेज किया था लंबा सा। वही है। हाँ 1320 लिखा हुआ है ना। ओके 1000 हाँ 1300 एंड। ड्रॉप तक मैंने जो की है 150 है। चलिए उसका तो इतना मसला नहीं है, बट 140 का आपने इसकी वैल्यूशन लगाई है। um, हाँ इसको देख सकते हैं। तो 140 इसके। लेकिन ये ऑफ मार्केट पर है, मैंने घर को नहीं देखा कि किस कंडीशन में है। हाँ उससे मैं पूछ लेता हूँ पिक्चर्स का। मैंने उसको बोला था कि पिक्चर्स मुझे सेंड करना जब अंदर जाओगे, तो मेरे ख्याल से वो अंदर गया नहीं अभी तक। और आर्बर का ब्रदर वो लोगन का क्या बना, क्या बोल रहे लोगन का क्या बना जो हैं? लेट मी चेक लोगन। लेट मी फोकस ऑन दिस। इसको कॉल करके इसको ख़त्म करते हैं, फिर मैं चेक करता हूँ लोगन का। लॉरिन ने 45 किया है। नहीं, लॉरेन ने 45 किया है, बट वो बोल रही कि आप आगे नहीं सेल कर सकते इसको। राइट, एक ये मसला कर रही थी। और बोल रही थी कि आप तब भी सारी कॉस्ट पे करेंगे। तो उसको थोड़ा सा और पकने देना है उस हाउस को। थोड़ा सा और लगे रहने दो, एक आध हफ्ता। उसके बाद ही फिर जैसे 50 पे फंस गई थी, 50 से 45 पे आराम से आ गई वापस। राइट, तो उसको एक दो और वीक दे दो। वापस 43 पे आ जाएगी। 43 पे आ जाए और बोले कि हमें असाइनमेंट नहीं करना, मतलब आगे नहीं बेचना, दैट्स फाइन। ठीक है, 43 का हम उसको सेल से ख़रीदेंगे। आई डोंट नो, हमें पता नहीं 45 से 47 तक की कॉस्ट आएगी उसको ख़रीद के दोबारा बेचने की। ठीक है, और घर लिस्ट है 60,000 का, तो फिर भी थोड़े बहुत पैसे बच जाएंगे हमारे उसको दोबारा सेल करने के लिए। बट एट 45 पे हम 50 पे तो वैसे ही खड़े होंगे। ठीक है, हाँ, तो हमको दोबारा सेल नहीं कर सकते, दो टाइम सेल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही टाइम सेल कर सकते हैं। तो उस वजह से हमें असाइनमेंट चाहिए, बट वो असाइनमेंट नहीं दे रही है, मतलब सेलर नहीं दे रहा सही। है। लेट मी कॉल दिस गाय। Thank you for calling Omni Realty Partners. Your call is very important to us. If you know your party's extension, you may dial it at any time, or please select from one of the following options. For assistance with buying or selling a home, press 1. If you have interest in one of our property listings, please press 2. This call will be recorded for quality and training purposes. To go directly to voicemail, press star. Thank you for calling. Please leave a message and your call will be returned as soon as possible. Hey Cody, hope you're doing well. I just wanted to check in on the three properties that we're working on. On the Enterprise Street, I was hoping you will have a chat with the Mrs. Seller or Miss Seller, I guess, and let me know if they're able to um, get a DSCR lender in place and take over the property that way. And then we can come in and we take over their mortgage in XYZ. So that was one question I was waiting for. The New Orleans property, we need pictures for inside
just so we know where we at in terms of the price, the rehab cost, whole 9 yards. On the Arbor Vitae property, I think we are okay with the cash offer. I just want to also know on this if the property has any major updates. I think you mentioned somewhere around 99, so I want to see what does the property look like from inside. So pictures on this one would be great as well. I am able to see that looks like the kitchen might have been replaced. I think the floors of the kitchen and living room, but the bedroom might need some work. So, looking forward to these updates. I will definitely be able to give you a number on based on these. Talk soon. Bye for now. Thank you, Travis, the phone. So that's that. Um, and then the Logan was the one now. It's the Helen Street one. लोगन को कल मैसेज किया था. I think the description, the issue is not the interest but the ability to refinance. Let me. He is there. Any update on this? लोगन बोल रहा था कि मुझे प्राइस के ऊपर भी पैसे दो. 55 बोल रहा 50K दो और मुझे 8% इंटरेस्ट दो. और land contracts do not offer better terms than bank. I'm sure you know this. Unless this is your first time, if you want to add. तो उसने बोला था कि 5,000 और ऐड कर दो तो मैं बात करता हूँ. तो 55 मांग रहा है. बट आई मेंशन कि उसको मैंने इतना बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है उस पर 2048. हाँ, तो मैं उसको बताया था कि ये प्रॉपर्टी 2 bedroom की है. इट डजंट हैव मच वैल्यू टू ओवर पे XYZ. तो उसने बोला था ठीक है मैं सर से बात करके बताता हूँ. then he didn't reply yet. So I just sent him a text message again. Yeah, इसका cash on cash return अच्छा है. All we have to do is just to get it under contract for seller finance. और 45,000 is not a big amount. तो आप I don't know 10 साल के अंदर अंदर पूरा पे कर सकते हैं without balloon. But technically balloon हम रख रहे हैं फिर भी. So hopefully this makes sense. इन 3 प्रॉपर्टी की हमारी बात हो गई एंड इस पे हो गई. आपने हुसैन नंबर रन करे थे वो जो बड़ा सा पोर्टफोलियो था आपके पास, उसकी क्या अपडेट है? या अभी आप उस पर काम कर रहे हैं? Let me know. I'll move on to the next person in the meantime. Okay, Harry Amen. I did that. Hamad said DM. I dropped your text. Assalamu alaikum. Said why can you check DM? Okay. Let me check Hamad first, and then I'll go to the next person. So Cruxy. Listed price 5.2, net operating income 386, cap rate. I sent him LOI 5 million, 500,000 down payment. Agent said he needs signed LOI. He needs signed LOI. What does that mean? LOI is LOI. But I mean, if agent says something like that, that means it's a positive. It's a positive thing. So square footage. Net operating income, stories 3, parking space, cap rate is 7. I hope it's a full building. I hope it's not just one freaking apartment. Yeah, it's just this building.
Hello, this is Syed. Hi, this is Cody with Omni Realty Partners. I missed your call. Hey Cody, how you doing? Just left you a I'm message on that. good. Yeah, I haven't heard the message. yeah, no worries, no worries. I'll explain. So basically, let me pull out all three properties here, just so I know what I'm looking at. So it's Enterprise, Arbor, Vitae, and there was one more, I can't remember. New Orleans, I think. Yes, 2228 2228. First Street. Okay. Yeah, so let's go with Enterprise. I guess the last time we chatted, I kind of proposed an idea if um, Mrs. Seller was or Miss Seller would be okay to kind of go the DSCR route, and and we take over it and kind of pay their debt um, on a monthly basis and kind of balloon them out in that 84 months period. Have you communicated that with Seller? Any thoughts on that? So, yeah, so if she goes through with the seller financing, then depending on what that particular, that's why I was waiting on offers to know what direction from our last conversation, because she's open, but yet she's not going to press the play button on this house with the refinance or DSCR until, um, she knows of a direction, because she doesn't want to start that opening and then there's prepayment penalties start versus just, doing just a refi without the cash out, and it will reduce how much the monthly payment would be. So we haven't opened that conversation with title loans just yet, because we're just kind of waiting on your direction. Okay. Now, I did talk to her too about the cash buy, which she understands that, I don't know who is calling me with this, but, okay. But she's open to that too, granted that she's not having to come out of pocket on that particular closing. It has to make financial sense. So her numbers were basically, like we had talked about, the Right. 95,000, Right. which would be within that range. But if it, comes back where you buy, a little less than that, then that's just something I have to bring back to her to review and see if that would even be feasible. Okay. So essentially, she's waiting on us to give her the final number. Based on that, if it works for her, she will then go to the title and figure the other things out. Correct. Okay. And from your perspective, the house is pretty much brand new, no work needed, correct? Correct. There's no work, but just so what? Because I can do, like I said, there's a tenant in there, and I can do a walkthrough. I think, did I send photos of this house to you? Um, Photos we have it online, but I think the only thing I was kind of worried was the bathroom. Looks like it needs to be worked on. Unless I mean it's an old No, picture, so no, yeah, the photos that I think I should have, I think I sent some information to Anna because of the current, because that was back, those photos were back then, not current. So, like the bathroom and everything, like the tub has been resurfaced and it has been updated. So I sent all of those photos over before the tenant moved in. okay, very well. Then I'll check with Anna. Let me text her right now and see if she's available. Okay, so that's fine then. And sure, I can do something even within 10-15 minutes on this. The asking price is everything that is the same, right? So if we are going with the seller finance, um, the tenant is in place. I think we should be fine coming at asking on this one. Okay.
Yeah, into your email. And let me go back. How do I pronounce your name? Because it's I was seeing Saeed, yeah. but That's fine. That's fine. It's Saeed. okay. Yeah, you did I well. don't like butchering people's names. No worries at all. But I sent the email May 9th at 11:08 p.m. Central Daylight Time to Anna, and I can forward this back. I can forward this to you if I have your email address. Sure. Let me text you right now. The thing is, I'm Okay. still a little confused on your phone. So this is your personal number or the one I called? Which number? The 225-277-3788 is a cell phone number. Okay. My office number is 225-768-8171. My extension Yes. is 702. Okay. Yeah, because it was pretty hard to get a hold of you, um, but yeah, I figured this number will be the correct one. First of all, let me save this so that we can be in touch. Personal. So there you go. I'm sending you my email right now. Okay. There, I just sent it. Okay, let me see it. Well, So yeah, if all I need is a little bit of a picture, updated pictures. Looks like Anna did receive it. I can get a hold of her too okay. as well, and then try to figure this out. But if you can forward that to me, I can just run the numbers right away. Okay. So I'll send that to you. Second thing, um, New Orleans. So this is going to be interesting, but let's see, there was a broker who had listed this property without authorization. Really? Um, so, yeah, so that property, there are some photos that I can share with you on this property from that listing that have to be taken down quickly. Um, but, yeah, it was interesting. It was like it was, the buyer of the property at that time, I guess it was an investment company, and they had the authorization, they thought they had the authorization to list the property, but they didn't. So Interesting. I had to take that up with the listing broker, and they had to remove it because they were not authorized. We are. So, Right. so yes. So they listed it for like 135,000. No, I'm sorry, 235,000, which was well over what this seller was going to list it at. Yeah. Yeah, so I'm like, yeah, that's definitely a red flag there, because the listed price is going to be 219,000 to be exact. So they kind of effed that up for creating an MLS number that was only alive for less than 5 days. But regardless, there's a stepping stone that shows the valuation is still strong. But the ARV and projection for the area and location is exactly 280,000. So, well, that range of 260 to 280 that I've gone over with you before. So so the seller's perspective now is just, like I said, 219 and being able to sell it where it would be on the market not a long period of time. So the projection now is it's expected to go live Saturday or Sunday of this weekend. Okay. Yeah, I mean, But we I should be can able to forward. get something in writing before that. But I mean, I wouldn't stop Mr. Seller to go on the market, Yeah. because it's just not a Right. good business. He might get better offer than us. That's completely fine. I would want him to Okay. win or her to win, um, at the end of the day Right. as well, right? So it has to be mutually benefited transaction for it to work, essentially.
Right, and this one, I know for a fact they wouldn't be doing seller financing. So Right. if, and I understand the buy box that you guys have. So, I wanted to bring it up for the fact of knowing that it is a listing that is coming up. If you guys did have any type of interest to that one. Um, Just out of curiosity, so I checked Zillow. The estimate I was getting, it was about, I think, 230. What do you think of yeah, that? Is it correct or they're still behind a bit? no, the estimate is never going to be 100% correct, Mm-hmm. ever. 100%, yeah. Because considering the location and because this particular location, you have multiple properties that are going to be of the same style, but the condition being average or fair condition, because you have fair condition, you have average condition, you have good condition, and this property is going to be considered good condition. So the 234 range on the destination is going to be specific between fair and average. When you Okay. look at the actual value, when you look at the particular location of the house itself and its condition, the BPO valuation view is going to be the range of 260 to 280. Okay. You have properties that are considered fair condition, where the sales point would be closer to 160, 170 range, because, there are improvements that need to be made inside those houses. They're not falling apart, but, Right. I still consider them as fair condition versus, an average condition. Is it livable? Yes, but there are improvements that would influence the value for sure. Makes sense. So the in New Orleans one is completely cash, basically, or conventional. They're looking for. Um, in terms of rent, do you know they'll be able to do the DSCR, 1.2 or one Oh point two yeah, five ratio, whatever? it would definitely exceed that. Let's see, hold on, because it was 1475 as a comp per unit. That's 2950 per month in gross. You might be able to go above that, but Okay. these are conservative numbers, very conservative. Because 1475 is the market rate um, for a two-bedroom, one bath in Orleans Parish. I see. It's currently rented? No, it's not. It's It's vacant. vacant, yeah, okay. Mm-hmm. And is there a possibility that they might be able to put someone in? Or, I mean, you can help them out with that, you think, Oh yeah, before they yeah. close I investment? have no. Yeah, like I let's see here. I don't have the sign up on the property yet until of course we finish these next two pieces. But when I did go to do my interior inspection and walkthrough, I think it was maybe one. No, it was two individuals, but I think it was representing one person. But they were inquiring about renting the property. They thought I was the owner. I'm like, no, ma'am, I'm not the owner of the property. I'm just an inspector. And I left Nice. it at that. But the area, like the days on market for rent on that in that particular area is, I think maybe 7 or 8 days on market. Um, but that wouldn't be an issue. Like if you guys were to have an offer that would be in line of the contingency would be to lease up within a period of time, then that would just be a part of the offer. Okay. What I do know in confidence is that from an average, not the highest and not the lowest, 1475 is what I know one side would rent for. The highest would be around $1,700 to $1,800 a month for one side. Um, and that would be including appliances. So without appliances, 1475 all the way per unit. Including appliances,
would be 17 to 1800 per side. So that would be a question I'd have to take back to the owners on that, but I don't want to open that door until we reach that point. Right, right. That's fine. So yeah, so once we go live, then you'll see that it's up there, and it's up to you on that part. But just 99.999% with reassurance that 1475 per side would be the lowest if I were to promote it and rent it out. That's what I know it would rent for. Okay, just a quick question before I let you go. On enterprise property, what was the asking price you mentioned? For enterprise, Yeah. it was 95. Okay. That's thinking to get 95. Sure, I'm just gonna run it in the calculator right now. So 95, if we go with that, then let's say 10,000. We do down payment. So 10,000 down payment with a $1,025 rent. After management expenses, vacancy, I would be at around $214 at a 33 years amortization for the, let's do 30 years amortization. That's about $236 per month. So Okay, what is that considering? That's based on owner seller financing? correct, yeah. So let's say if I go with 100,000, just add five more thousand, that would be, we could do about 250 in payments, 10,000 down, and yeah, 250 to 215? 250. So that's 30 years of amortization. Monthly. Let me text you, how's that? Just so we're on the same page. Yeah, because I'm typing it in so I can remember it. Yeah, I'll just give you like a short version. PPDP is 10K monthly. Owner financing, that would. Well, I will also type in that we will pay the closing on this from their side. Okay, so if she were to, okay, let me go back here, because 95,000 is with consideration to the sale, that's considering a cash sale. Oh, that's Looking considering at this cash sale, from the okay. seller, right, because the ARV, or at least the value based on what the lender has already placed is 130,000. So if she were to do, so if I take this to her and looking at 250 a month with 10% down, her interest rate is right now at that 10%. So if she were to refi, it would be around 8, it would be 7.5 to 8.5 interest rate. So that would be over $250 a month. So the seller financing would not work for this property. Well, I was thinking, no, I can go 130. I mean, I would want to give the asking price that makes sense to the seller, right? So I wouldn't then go with 95. We'll go with 130, and let's do 13 down. I would want to know though how much would be their payments, or what sort of payments they will get,
because now I'm getting about $325 of payment at 30 years of amortization. Okay, so $330 monthly Yeah. on a 30-year. Okay, you know. And that's strictly principal. That's not considering interest Yeah, so and this growth. is not strictly principal, yes. I mean, our position in this is that, so there's two things, right? So one, that we don't discuss on the price, we just come at asking. Number two, by the end of the balloon, we need to have, even if you're paying $1, I would want to pay in principal so that I have a very good chance to refinance at the end of the term. Now, if Right. Mr. Seller wants like interest, let's say, I don't know, they want, I don't know, 4%. So we would rather go in and add that into the purchase price rather than putting it in the interest box. Does that make sense? Yes. So technically, um, it would be the same amount. It's just that they will have a later payout in a sense, and it will make sure that we are able to refinance at the end, right? If in for any reason if you're not able to, then we both be in trouble. Our seller finance agreement is coming to end, and we're not able to refi, and that is going to be problematic for both. So we have to Right. make sure that we have enough equity. Plus, hopefully, the property will appreciate at that level that we don't have to worry about equity as much. But if it doesn't, then it gets into that territory. Right. So the last, I'm looking back, so Mr. Kyle, the AE with title loans, he sent me this over on the, I guess the estimated, I guess the term sheet projection. So that was, yeah, 7.5% interest rate. And they set up a prepayment, I guess a prepayment penalty of a 5 year, so it's a reduction per year, 5.321. They were showing monthly payment at $894. Yeah. That's considering cash out refi on the estimated property valuation of $130,000, a payoff of $78,000. Let's see, the DSCR ratio is, that ratio is 1.15. 1.15. Yeah, It's that's close. 1.15 at the 1,000, yeah. I think it needs to be 2.5 or, well, sorry, 1.25. 1.25 or greater. Yeah. So if it were, let's see, so that would be considering 130, okay, so let me see, 1.25. Yeah, so what'll happen is if she were to go with that, okay, so without doing the cash out refi and just going based on the 78,000, that would take her monthly payment down to like 750. Hold on.
was showing monthly estimated monthly principal and interest of $727. So okay. So based on so looking at the 130,000, the estimated principal and interest would be at $727 a month. But when you include the escrow services, that takes it to $894 a month. That's considering property taxes, Mm-hmm. insurance, mortgage insurance. Um, so, so if that's reduced. They'd have to provide me a reset on this, but in order to get to that 1.25 or greater, the it wouldn't be a cash out refi at the valuation of the property at 130. She'd have to go less. Which, like I said, she doesn't have to max out, Right. Yeah. That's just looking at the cash out refi option. But if she were to just go to the 78,000 or even 95,000, then that would put it at the, it'll be above 0.25 on a DSCR ratio. Right. Did I text you the numbers yet? No, I didn't, right? So let me just shoot you a quick text. But again, I don't think this number would make sense based on the payments plan at a 30 years amortization. It might be able to work if I do like let's say 15 or even 10 years. Maybe then we'll be able to let me see what 15 would look like. Yeah, so it would have to be around that mark, like 15 years amortization, which will not give us enough. I mean, we are losing money at 15 years amortization. Right. That wouldn't make sense either. Yeah, $180 or so. So I don't know. Maybe the cash offer would be the only offer that we can kind of entertain. Okay. I'm Okay. just thinking out loud. And it is what it is, right? So, if that's the case, then, it will be a strong cash offer to present. And, it'll be up to the seller to make that decision. I mean, realistically on both, honestly. Sure. Yeah. Do you? I mean, I don't know if it's okay to ask you, but would you be able to send me some comparables, if it's not too much work? Yeah, I can send that to you. It wouldn't be a problem. It's usually what I've heard is usually just they have to pull a report and kind of automatically generate it. If that's correct, it shouldn't take too much long. But if it's taking a lot of work, it's okay. I can kind of check Zillow as well too. No, it's just a matter of just going into my MLS and pulling up what's local. Yeah. It's extremely easy. Very well then. So that won't be a problem. Try to hold on just a moment. Sure. I guess we'll have to continue the class while he's working on it. Looks like it's going to take some time. Last time I had a chat with him, it was about 32 minutes. I feel like 32 minutes again would be a lot of work. Okay, let me see who's next.
was looking at the Hamad's property. ओके सो हमने इसको ऑफर दी थी ये वाली 1.5 की 375 डाउन yes equally and then we said 174 उसका रिप्लाई आता है हमारा thanks yes and I'm not interested in interest only payments we didn't give हमने इसको interest only कहाँ पेमेंट दिए हमने तो principal only पेमेंट दिए or a low fixed rate excuse me or a low fixed rate for 9 year two two 4 0 Yeah, so Hamad, I think this is in a nutshell, this is a good property. उसको उसको आप दोबारा रिप्लाई करना बोलना कि these are the principal only payment and low fixed rate for 9 years and the reason we have given the payments low is because we will be financing the down payment. We will have about 10% interest from there. Okay? We will finance down payment, we'll have that 10% interest. Hence why we will not be able to give you any interest on the purchase. I just sent you that. Text. I'm trying to get this. I'm just getting a quick call, man. Can I quickly take it? Yes. Okay. Awesome. Thank you. Give me a second. Okay. I'm just gonna put him on hold. Somehow it hang up. Okay, I'll call him back in like 5 minutes. So yeah, Hamad, two things you have to tell them. Oh, okay, he's on the other call as well. So two things. One, that we mentioned the principal only payment, and number two, the rate is low. There is no interest because we will be financing the down payment. If ask him if you like, we can bring him more down payment, just so you have more cash at closing. Hamad, are you with me? You can hear me? ठीक है guys क्यों देखें मैं आपको इन्वेस्टर के दिमाग से समझाता हूँ
اگر انویسٹر آپ کو دے رہا ہے, اب جیسے ہمارے کیس میں ہم اس کو دے رہے ہیں 300,000 رائٹ ناؤ, اور پھر ہم اس کو بول رہے ہیں کہ 1.1 ملین ہم آپ کو 9 ایئرس کی پیمنٹ پلان میں دیں گے, ٹھیک ہے, جس ذہن میں رکھنا. تو وہ ٹیکنیکلی 1.1 ملین کا لون دے رہا ہے ہمیں, رائٹ. اگر آپ کو لون دے رہا ہے وہ, تو وہ فری میں کیوں دے پیسے, اس کا مطلب ہے فری سے مطلب ہے کہ اس پہ چارج کیوں نہ کرے, رائٹ. میک سینس کرتا ہے کہ 1.1 ملین دے رہا ہے 9 ایئرس کے لیے. 9 ایئرس میں جو پیسوں کی 1.1 ملین کی ویلیو ہے وہ ٹیکنیکلی ہو جائے گی 800,000 یا ایون لیس, 800,000 تک پہنچ جائے گی, ٹھیک ہے. آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اور نمبر پہ لکھا ہوا 1.1 ملین ہی ہوگا, ٹھیک ہے. بٹ ان ریالٹی کا مطلب ہے کہ ان دنیا میں وہ 1.1 ملین نہیں رہیں گے, وہ 800,000 ہو جائیں گے. وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, جیسے اگر میں یہ کافی لینے جا رہا ہوں, اب یہ کافی مجھے $5 کی پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ 9 سال میں یہ کافی $5 کی نہیں پڑے گی. یہ کافی کیونکہ چیزوں کی پرائس بڑھتے 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 وہ مجھے $10 کی پڑے گی, مے بی $8 کی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو میرے بینک اکاؤنٹ میں تو تھے $5, میرے بینک اکاؤنٹ میں آج بھی $5 ہے, میرے بینک اکاؤنٹ میں 9 ایئرس کے بعد بھی $5 ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. مگر وہ $5 کی بائنگ پاور کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے کوئی بھی بندہ, اگر مجھ سے آپ لون لیں گے $5 تو میں آپ کو 9 سال کے بعد بولوں گا مجھے 10 دو یا مجھے 8 دو, کیونکہ $5 کی ویلیو گرتے 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 کم ہو جائے گی. تب تک دیکھنے میں تو آپ کو $5 ہی دکھیں گے, مگر ریالٹی میں وہ $5 کی جو بائنگ پاور ہے, جیسے آپ ایک بریڈ خرید لیتے تھے تو اب آپ نہیں خرید پائیں گے اس سے بریڈ, اب وہ بریڈ آپ کو $8 کی ملے گی, ٹھیک ہے. دیکھنے میں آنکھوں سے آپ کو لگے گا کہ میں $5 ہی سیو کیے ہیں اوور ٹائم. So that's why it's never a good thing کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیسے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. پیسوں کو آپ اسٹاک مارکیٹ میں لگائیں, ریل اسٹیٹ میں لگائیں, بینک میں پڑے ہوئے پیسے ویلیو لوز کر رہے ہیں. تو اینی ویز, اگر ہم سیلر کی دماغ سے سوچتے ہیں کہ 1.1 ملین ہم کو وہ لون دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی 9 سال میں ہم کو پے کرو, اور وہ 1.1 ملین ہی چاہ رہا ہے, تو وہ بیوقوف انویسٹر ہوگا کہ ایسا کر سکے, ٹھیک ہے. وہ بیوقوف ہوگا کیونکہ وہ اس کے پیسوں کی ویلیو 1.1 نہیں رہے گی, 900 تک پہنچ جائے گی, جبکہ ہم اس کو 1.1 کے ہی پیسے دیں گے کیونکہ ہماری ایگریمنٹ ہی اتنا ہوا تھا, رائٹ. تو دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک ہے, پہلی بات یہ کہ ہم اس کی ایٹ آسکنگ آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو ایک ایڈوانٹیج دے رہے ہیں یہاں پر. ظاہر کمرشل پراپرٹیز سالوں لگی رہتی ہیں, بکتی نہیں ہیں, تو ایک تو ہم اس کی ایٹ آسکنگ آ رہے ہیں, اوپر سے اس کی پراپرٹی 50 60 100 200 دن کی لگی ہوئی ہوگی, ایک وہ بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں ہم نے سیلر کو پوائنٹ دے دیے. اور تیسرا پوائنٹ ہم دے رہے ہیں کہ ہم لارجر ڈاؤن پیمنٹ لے کے آ رہے ہیں, جو کہ 30% ہے, 40% ہے مسٹر سیلر کے لیے, ٹھیک ہے. تو اور اس کیس میں, رائٹ, لارجر ڈاؤن, اس کیس میں ہم یہ بول سکتے ہیں کہ بھائی 375 ٹھیک نہیں لگ رہا, تو ٹھیک ہے ہم آپ کو آئی ڈونٹ نو 500,000 لے کے آتے ہیں, اس سے بول دو پہلے, بٹ ہم 500,000 لے کے آتے ہیں. تو اس کا ہوگا کہ اگر 1.5 کی لگی ہوئی ہے تو $5 اس کو ابھی مل گئے, باقی 1 ملین اس کو 9 ایئرس کی اس میں مل جائیں گے, ٹھیک ہے, منتھلی پلان میں. تو اس وجہ سے مسٹر سیلر بول رہا ہے کہ میں 9 سال میں لو فکس ریٹ نہیں لوں گا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں یا تو فکس ریٹ سے مراد کہ اگر 2% آپ اس کو انٹرسٹ دے رہے ہیں تو 2% نہیں لوں گا, فکس نہیں کرنا. ایک سال 2 ہوگا, دوسرے سال 2.5 ہو جائے گا, 5ویں سال 2.9 ہو جائے گا. اس طرح کا وہ انٹرسٹ بڑھانا چاہ رہا ہے تاکہ میرے پیسے میرے لیے کام کریں, ٹھیک ہے. Anyways, so Hamad, hopefully you understand what you need to say to the seller. Okay, I'll go to your next one. Oh, I guess I already have this open right here. Okay, تو یہ بول رہا ہے کہ 2.5 ملین 5.2 ملین کی پراپرٹی ہے, ہم نے اس کو 5 ملین آفر کریں, 84 months کا پیمنٹ پلان. ایجنٹ سیز ہی نیڈ سائنڈ LOI. یہ سائنڈ LOI کا میں کیا کروں اس کا, آپ کی LOI میں نیچے سائن نہیں تھی. Let me see. I mean, آپ اس کو
अपना नेम लिखो और स्पेस डालो और एक यहाँ पे आप वो लिख दो, अपनी साइन कर दो. That's it. That's probably the only thing we can do. I don't know what he wants in terms of signed document. This is a brand new construction. Seller will get the credit of occupancy in this next week. Credit of occupancy. It is 12 unit vacant. We can rent at market or section 8. Obtain really good cash flow. Let me know if you would like to come see the building. Seller is very motivated to must sell ASAP. Oh, certificate of occupancy. Okay. Well, the thing is, it is a 12 unit building, so which is not bad, right? So अंदर से तो ठीक है, इसका कोई काम नहीं है. I mean, at least दो जो यूनिट्स ने दिखाए उस पे काम नहीं है. 20 days in market. हमद इस पे नंबर रन करें आपने, क्या मंथली प्लान बनता है इसका. आप ऐसा करो कि ना उसको पहले तो साइन LOI भेजो और उसको तो वहाँ से ख़त्म करो एंड देन जब वो आके फिर आपसे आके पूछेगा मंथली पेमेंट क्या है, तो तब आप फिर नंबर रन करना. अभी शायद फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है. आई थिंक कैप रेट इज़ 7.636. आई थिंक यू विल बी फाइन इन टर्म्स ऑफ द कैश फ्लो. ठीक है, आई थिंक विल बी फाइन इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो. सो अगर 500,000 पे हम उसको लेके आ रहे हैं डाउन पेमेंट पे, 5 million की प्रॉपर्टी है, 500,000 एंड 12 यूनिट वेकेंट. 12 यूनिट ही तो है इसमें, 12 यूनिट ही है इसमें. ओके, या सो इफ इट्स वेकेंट आपको बेसिकली वो मार्केट रेंट बताएगा, तो आप मार्केट रेंट उसका लो, या तो वी कैन क्विकली चेक व्हाट ज़ीरो इज सेइंग. Seven baths, zero. That's wrong. 12 यूनिट्स में हर यूनिट कितने का है? Is it two bed, one bath, or what is the status of this? Yeah, I think it might be two bed, one bath. Yeah, so the rent of two bed, one bath is pretty good. It's 300,000. Again, it's a big city, right? It's a very famous city. Every GTA Vice City is bana hua hai. I mean, name it. It's in all movies. So that's why the rents are very high in this, right? Or the property prices too, and the property prices too. Anyways, yeah. So I think 300,000 per unit, and we have 12. So 13,000, about $15,000-16,000 per year, per month. Yeah, so I think it's fine. 15,000 अगर हमें मिल रहा है, technically the one person के लिए 500,000, 50,000 हमें मिलनी चाहिए a year. But I think that's fine. So आप उसको sign LOI भेजो, and then tell him, and then LOI को आप sign करके उसको भेज दो, and then when he return, और उससे बल्कि पूछ लो कि what is the each unit could rent for. उससे rent का भी पूछ लो ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि ये नंबर क्लोज है या बहुत ही दूर है, and then we can go from there. Okay, sure. Let me go to the next. I think it's Fahim. He's been waiting for a while. Okay, so Fahim. So this is the property. This is the property.
Okay, so 60,000. Let's see what we have. So 90, asking price is 90. Oh, I think they did a price cut. I think it was 90 when you offered him, and then they, yeah, so see, it was 90. जब आपने ऑफर करी कि 90, अब उसने 60 पे लगा दिया अब. Her counter 50 after she reduced the price 90 60, kindly check advice what will do, yeah. तो उसने 90 से 60 पे कर दी खुद ही से, which is very bad for us, very bad, because अब हम उसको हमने इसका 70% लेना है, राइट? क्योंकि अगर कोई और इन्वेस्टर होता, हम उसको 50 पे लेके आए तो वो बोलेगा मैं तो खुद ले लूँगा 50 पे, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है. Update 519, this is a crazy price drop, no assignable offers, seller to net 60k. No assignment, इसका मतलब हम उसको आगे से नहीं कर सकते, but inspection to be done before offer will be submitted. Two-story home, someone configured, blah blah blah. So he offers a इसमें मेरे ख्याल से विंडो का भी कुछ मसला है, विंडो ऐसे बोर्ड अप है. Yeah, what can we do? Unfortunately we have to go lower from 60, right? अगर सब कुछ ठीक है तो हमको 60 पॉइंट्स, सब कुछ ठीक है तब जाके हम 42 उसको देंगे, और 42 पे ये मानेगा नहीं. इसको आप सेल्फ फाइनेंस की ऑफर दो फिर. I don't think this could work. Tell him like I want you to get the full price, so आप 90,000 उसको दो, और फिर सेल्फ फाइनेंस की ऑफर दो, 9,000 डाउन दे दो. I don't know क्या आपने दी है, let me see notification, no voice. How about now? Can you guys hear me? Hello. Can you hear me now? ओके, सो मैं कह रहा हूँ ये कि क्योंकि इसने खुद 60,000 पे आ गई है, तो हमको अब इस 60 का 70% लेना पड़ेगा, जो कि अबाउट 42,000 है, ठीक है? और वो 42,000 पे मानेगी नहीं, तो आप उसको बोलो ठीक है मैं आपको 90,000 देता हूँ जो आपके पहले पैसे थे, 9,000 डाउन देता हूँ, और बाकी मैं आपको पेमेंट प्लान में देता हूँ. आई थिंक आप उसको सेल्फ फाइनेंस के ऑफर पे ले आओ. दैट्स प्रॉब्ली बी द बेस्ट सोल्यूशन ऑन दिस वन. अगर ये प्राइस नहीं गिराती ना, 90 से 50 पे होती, आई थिंक देयर विल बी समथिंग वी कुड मे बी डू समथिंग एल्स. सैयद भाई ये सेलर फाइनेंस पर नहीं, मैंने इसको कहा था, उस पर वो एग्री नहीं कर रहे ना, वो उसको कैश चाहिए, क्योंकि इसका जो ओनर है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और वो कैश लेकर इसको क्लियर करना चाह रहा है. ओके, उसको कैश चाहिए. और ये भी तकरीबन 100 अबव पर बिकी हुई है, सोल्ड हुई है इसकी ना, तो ये काइंडली अच्छा, आप नीचे इसकी हिस्ट्री देखिए. sold 125. मे बी इसमें कुछ मसला होगा देन, राइट? अगर वो 100,000 पे उसने सेल किया हुआ है, आई मीन उसने खुद बाय 125 की करी है और वही सेल कर रही है, तो आई बिलीव इट्स समथिंग रॉन्ग इन द हाउस. वो इतना ज़्यादा पैसे कट नहीं करेगा. और दूसरी बात ये है कि अगर उसने 125,000 की ली हुई है तो उस पर लोन लाजमी होगा, राइट? 2022 में उसने ख़रीदा है और अभी 26 चल रहा है, 26. तो आई डोंट थिंक कि इस पे लोन नहीं होगा, इस पे डेफिनेटली लोन होगा.
वैसे उसने स्टार्ट अगर आप देखा जाए तो स्टार्ट तो 175 से किया था, बट वो करते 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 60 पे आ गया. Let me quickly ask what's going on. I'm gonna call her and see कि क्यों इतना नीचे सेल कर रही है वो. I'm sorry, you can't leave a message because the person you called has a voicemail box that hasn't been set up yet. Goodbye. Pepper, what's he doing? इसका नाम Pepper? Pepper? Interesting. Hey Pepper, hope you're doing well. I just wanted to have a quick chat on the property located at Morehouse Road. I believe you've been speaking to Fahim on this. We're interested to move forward on this property. I want to know what's the best cash offer Mr. Seller would be able to entertain. The last offer we have sent was around $45,000. Thanks. I also wanted to know how much work this property required, or is it rent ready? Entertain. Okay, well, I've sent him a text message. Let's see if Pepper respond. Let me see if his number. Okay, so let's see what's next. That's Morehouse. This one. So asking price is 499. Down payment is 50,000. Monthly payment is 650. Balloon is 96 months. Her reply is under. Hey, the seller's response 50K down. Okay, 4% interest only. 1,500 per month. I would prefer a 5-year term. Let me know. And this is your numbers. 50,000. So she agrees on 10%. Very good news. Okay, so that's good. 20% cash on cash with 57 advertisation. और वो उसको ये भी ज़्यादा चाहिए and ये भी ज़्यादा चाहिए. Okay. Fahim, what we can do, देखिए एक चीज़ होती है ना कि अब हमने उसको एड आस्किंग दे दिए, राइट. 400,000 उसके यहाँ लगे हुए थे, तो हमने वही 500,000 यहाँ लगे हुए थे, हमने वही 500,000 उसको दे दिया. ठीक है, तो अब वो थोड़ा सा फैल रहे हैं कि भाई आपको उसको अब इंटरेस्ट भी चाहिए उस 500,000 पे एंड मंथली पेमेंट ज़्यादा भी चाहिए, राइट. तो आप ऐसा करो कि ना प्राइस को कम करके उनको इंटरेस्ट दे दो और उनकी मंथली पेमेंट दे दो.
اور جتنا کلوز آ سکتے ہو اور پرائز کو کم کر دو. مے بی پرائز ول گو اپ ٹو 300,000 اور سم تھنگ. دیٹس فائن. ٹھیک ہے, تاکہ ان کو دکھانے کے لیے ان کو یہ دکھانے کے لیے کہ دین وی ول گیو یو دس پرائز اگر آپ کو اپنا انٹرسٹ چاہیے اور اپنا وہ چاہیے منتھلی پیمنٹ. ڈاؤن پیمنٹ آپ اتنی رکھو, سوری نہیں, ڈاؤن پیمنٹ بھی آپ کو کم کرنی پڑے گی, رائٹ. آپ کو 10% کا کرنا پڑے گا. اچھا, اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو 300,000 پہ کریں اور 30,000 یعنی کہ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہو جائے گی. آپ ایسا کریں پہلے نا, انٹرسٹ رکھیں اس کا. انٹرسٹ جو بول رہی ہے 4% بول رہی ہے نا, تو 4% انٹرسٹ رکھیں تو آپ کا یہ نیگیٹو چلے جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ہلکے 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 کے پرائس کو کم کرتے رہیں جہاں تک آپ کا کیش اینڈ کیش ٹھیک بنتا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح آپ اس میں بھی ٹرائی کریں. بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پرچیز پرائس کو کم کر دیں اور اس کو نیچے لے کے آئیں, پھر اس کو جتنا انٹرسٹ چاہیے آپ اس کو دیتے اور جتنی پیمنٹ پلان مانگ رہی ہے وہ دیتے ہیں. اوکے. اوکے, یعنی 5 یوزلی ایئرس کا پیمنٹ پلان دے دیں اور اس نہیں, کا وہ یعنی 1,500 منتھلی مانگ رہے ہیں نا. ہاں اگر آپ کر سکتے ہیں 1,500 تو گڈ, ورنہ آپ کلوز آ جائیں 15, اس کو بڑھا دیں اور انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں, دیٹس اٹ. مگر آپ جو بلون ہے اس کو 8 سے کم کر کے 7 پہ لے جائیں. ٹھیک, ٹھیک ہے, تاکہ ہمیں دوبارہ 7 اس سال کے کا ٹائم نمبر مل ڈال جائے گا سکتے اور پیسے اس کے بہت کم کر دیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, اینڈ دین پھر جو بولتے ہوئے ہم اس کو دیکھتے ہیں, ورنہ وی کین کال ایز ویل. اوکے. Okay, thank you. Let's see if there's any other property from Fahim. سید بھائی, وہ دامیکا کا کانٹریکٹ ہو گیا؟ جنیکا کا کیا تھا اگین, ریمائنڈ می. کانٹریکٹ دینا تھا نا اس کو. جنیکا, آئی تھنک اس کا شاید کانٹریکٹ میرے خیال میں کل بات ہوئی تھی نا کانٹریکٹ کی, اس کی یہ آج ہوئی تھی, مطلب پرسوں ہوئی تھی. پرسوں ہوئی تھی. Yeah, Janika, property. Yeah, so the contract we haven't got it yet. So hopefully today we'll get it. It usually एक business day लगता है. But let me 1 second here so I can check if I have it here. इसका एड्रेस याद है आपको क्या था? ایڈریس میں آپ کو بھی بتا دوں, میں بھی بتا دوں. I see this one is یہ میں نے آپ کو ٹیکس کر دیا. sure. آپ نے اس کو ہیش ٹیگ سبمٹ میں جمع کرا دیا تھا نا؟ جی جی, ہیش ٹیگ سبمٹ ہاں میں بھی جمع کرا ایگزیکٹلی, دیا. ہاں میرے پاس اسی کا میسج آیا ہوا ہے. بٹ یا نہیں بھیجا اس کو کانٹریکٹ بیسکلی. یا اس کو ابھی نہیں بھیجا, آج ہمارے پاس آ جائے گا تو آج وی شوڈ بی ایبل ٹو سینڈ اٹ. مے بی آپ چیک ان کر لینا, تقریباً آج یا تو بھیج دیا ہوگا تو میں کلاس کے بعد چیک کر لیتا ہوں, نہیں تو آپ 2-3 گھنٹے کے بعد چیک کر لینا, میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں گا اس کی. اوکے, تھینک ٹھیک یو. ہے, نو ورائز. Okay, very well. Let's go to the next person. I think it's Harry. He responded. How can I read this, bro? I have no idea what he said in Chinese. Just like you know, I've sent him second position first. Sure. I have no idea what this is, but looks good. It's tough, man. How do you know Chinese is tough?
Okay, I'll just give you a thumbs up. That's good. Hamza, how do I get it correctly? Okay. Okay, I think that's about it, guys. What I will do right now, I will just go through a why am I opening here? The deal. Okay, so guys, next 10 minutes, I'm just gonna work on explaining the calculator. Just for anyone who is a little bit behind can kind of learn it. But I will not take any questions anymore because it's the end of the class. But I will explain the calculator, okay? So I think the new people or anyone in the YouTube live that doesn't know, आप लोग सुन सकते हैं उसको, ठीक है? Well, there's so many messages. I didn't see that. Sir, want to learn from Zillow? Of course, man. You can get started. Hi, Heather, and hi, movie lovers. Okay, so Hamza, I will take your property as an example. ठीक है, मैं आपकी property खोलता हूँ as an example ताकि आपको रियल भाई जी मेरे पास एक एजेंट है, उसके पास काफी ज्यादा कर्ज है और बिल्डिंग्स हैं। ठीक है वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो कर्ज है वो रेनोवेटेड है, मतलब मैंने सब कुछ ठीक है उसमें, तो वो मुझे कैश ऑफर 10,000 रिलीफ दे रहा है। वो कह रहे हैं कि नहीं, 30% मैं नहीं दे सकता। जब मैंने उसको क्या सेलर फाइनेंस दिया तो वो उस पर भी एग्री नहीं कर रहा। उसके साथ 6 यूनिट 4 यूनिट बिल्डिंग भी है, ओके वो तो कैसे उसको मतलब क्या करूँगा अभी? आप देखिए कमर्शियल बिल्डिंग्स जो है ना 6-7 ये कभी कैश में नहीं जाती हैं, ये तो कंफर्म बात है। अगर वो मांग रहा है तो आई थिंक ही इज़ नॉट डू मतलब अगर मांग रहा है तो वो उसको वो मार्केट पे नहीं होंगी वो, नहीं, राइट? वो बिल्डिंग बर्बाद नहीं हुई, मतलब उसने जस्ट मुझे कहा कि मेरे पास 6 4 यूनिट बिल्डिंग्स है, लेकिन घर पर वो सिर्फ सिर्फ कैश ऑफर पर मुझे 10,000 रिलीफ दे रहा है। अच्छा, और कितने कितने मतलब क्या कीमत है घर की? घर की एक था 95 था, वो कह रहे कि 85 पर मैं कम कर सकता हूँ। 795? नहीं, जस्ट 95 जस्ट था, 95? 95,000। ओके, वो वो देखिए 85 पर एग्री कर रहा था। 10,000 मतलब छोटी प्राइस का ज़्यादा परसेंटेज बनता है। सो वी आर क्लोज। अगर आप कैलकुलेटर में देखें तो बहुत ज़्यादा मसले की बात नहीं है। 95 है और वो आपको दे रहा है let's say 4766। घर में अगर सब कुछ ठीक है और वो दे रहा है तो वी कैन लुक एट इट। नंबर वन, उसको थोड़ा और लाना पड़ेगा नीचे। नंबर टू, उसका रेंट आप पता करें, राइट? उससे पूछिए रेंट लें ताकि हमें कैश ऑन कैश पता चले कि हाँ, हम उसने मुझे मेंशन किया था कि मेरे पास ऐसे गर्ल्स भी हैं जो पहले से रेंटेड हैं। ओके। अगर रेंटेड है तो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग, इट हेल्प्स रियली। मगर आपको 10,000 से प्रॉब्ली नीचे आना पड़ेगा ताकि जो बायर होगा उसको एक्विटी भी मिलेगी क्योंकि घर सस्ता लिया है, और उसको रेंट भी मिलेगा क्योंकि वो रेंट पे भी ऑलरेडी। ठीक है, मैंने जितनी बात कर सकी मैंने उसके साथ की है, अगर फिर आप कल उसके साथ कॉल कर लें और डिस्कस चल कर लें, क्या पता वो मान जाए। मैं वो तो कर लूँगा बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम कहीं उस पर खड़े हों। सो फॉर एग्जांपल आप सेल्फ फाइनेंस नहीं मान रहे हो ना, तो आप उसको सेल्फ फाइनेंस की ऑफर उस पर दे दो। आम, दूसरी जो यूनिट्स मल्टी यूनिट्स जो बिल्डिंग है कमर्शियल, ठीक है, सही। उस पर आप ऐसा करो कि 10% ज़्यादा दे दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप 5% देते हो एक्स्ट्रा और बोलते हैं नहीं सेल्फ फाइनेंस नहीं करूँगा, तो आप इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हट जाओ बोलो नहीं सेल्फ फाइनेंस नहीं चलेगी। आप सेल्फ फाइनेंस की टर्म बेहतर कर लो। ठीक है, हर चीज़ की एक प्राइस होती है, वो किस पे बिकता है, राइट? तो आप उसको बोलो ठीक है मैं सेल्फ फाइनेंस टर्म बेहतर करता हूँ, 1 साल कम कर दिया आपने, ऊपर से प्राइस थोड़ी थोड़ी और बढ़ा दी। मतलब कैश एंड कैश को देखते हुए आप थोड़ा बहुत खेलते रहो, ऊपर नीचे करते रहो, बट उसको दोबारा ऑफर दो और थोड़ी सी बढ़ा के ऑफर दो। ठीक है, अगर वो अगर आपने मैं बिल्डिंग पर बात नहीं की थी, मैं बिल्डिंग्स पर बात कर लूंगा, लेकिन वो जो अभी बात हुई थी वो सिर्फ हाउसेस पर हुई थी। वो कह रहा था कि मैं सिर्फ 10,000 आपको रिलीफ दे सकता हूँ और नहीं दे सकता।
क्योंकि वो कह रहे कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जो मेरे घर हैं वो रेनोवेटेड हैं, वो सही है। नहीं वो तो ठीक है, मसला ये है कि वो ऑफ मार्केट है कि ऑन मार्केट है? ऑन मार्केट से। हाँ ऑन मार्केट है, और उसके कितने दिन तक लगे हुए हैं वो घर? ये तो चेक नहीं किया आप उसको चेक करना और उसका। ये बात यूज़ करना, उसको बताना कि योर प्रॉपर्टी हैज़ बीन लिस्टेड फॉर 30 डेज, राइट? अगर 30 दिन तक लगी हुई है, इसका क्या मतलब है कि कम से कम 5 से 6 हज़ार या 8 हज़ार तक उसकी प्राइस ज़्यादा है, ठीक है? अगर वो 50 दिन तक लगी हुई है देन ईजिली 15,000 ज़्यादा है, ठीक है? तो ये नहीं बोलना आपने, बस ये बोलना कि कि आपकी प्रॉपर्टी जो है इतने दिन से लिस्ट लगी हुई है, ये डेफिनेटली इस पे सेल नहीं होगी। तो इसकी सही। बात करो, और कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करो सेल्फ फाइनेंस उस पे। कमर्शियल प्रॉपर्टी यूजुअली सेल्फ फाइनेंस पे ही जाती है, कैश पे कभी नहीं जाती है, ठीक, ठीक है? मैं उसके साथ बात करता हूँ, जो अपडेट है मैं फिर आपको हाँ आप बताता हूँ। बात करो, उसको क्लोज ले आओ कि इतना वो बोल रहा है कि नहीं कॉल पे बात करो, या वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं करता और बिल्कुल मना कर देता है, देन वी कैन डू इट। बट आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा अपने हिसाब से, जितना ज़्यादा कर सकते हो, देन वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। Okay, going back to I think Hamza's property. So this was the property. Seller आपको मैसेज कर रहा था, फ़ोन कर रहा था, right? And you gave him offer कि आपने उसको दी थी 150, आपने 150 की इसको ऑफ़र दी थी। फिर मैंने आपको बोलता इसको आप सेल्फ फाइनेंस की ऑफ़र दें, एंड देन सेल्फ फाइनेंस की ऑफ़र लेते, ठीक है? अच्छा हमजा, पहला काम हमने ये करना था कि परचेस प्राइस हमारे पास होनी चाहिए, और दूसरा काम हमें ये करना है कि ज़ाहिर हमारा कैलकुलेटर खुला होना चाहिए, ठीक है? तो पहली काम ये करेंगे, 220 है लिस्टेड प्राइस, ठीक है? LP बोलते हैं उसको, लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस 220, तो मैं 220000, ठीक है? मैंने लिस्टेड प्राइस उठा के यहाँ रख दी। ये होती है PP विच इज़ परचेस प्राइस, जिस पे आप परचेस करोगे, ठीक है? हम फॉर एग्जांपल फॉर नाउ हम 220 की ही बात करते हैं, ताकि हमारे पास मार्जिन हो थोड़ा डिस्कस करने के लिए बाद में, ठीक है? अच्छा हमें प्राइस पता चल गई। दूसरा काम हमें निकालना है फ़ौरन से, नंबर्स निकालने के लिए, इसकी प्रॉपर्टी टैक्स एंड इंश्योरेंस, ठीक है? प्रॉपर्टी टैक्स इंश्योरेंस ज़िलों पे अगर प्रॉपर्टी लगी हुई है तो इसमें ऑलरेडी मेंशन होता है राइट हियर, ठीक है? ये प्रॉपर्टी टैक्स, दिस इज़ एनुअली पर ईयर बता रहा है, और ये मंथली बता रहा है, ठीक है? ये होम इंश्योरेंस अगेन ये 876 एनुअली है, और 73 मैनुअली है एंड मंथली है, ठीक है? हमें ज़रूरत होती है मंथली की, तो हम लेंगे 112 एंड 73, हम लेंगे 112 एंड 73, और हम यहाँ पे रख देंगे ये रही इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस थी 73 और 112 इज द टैक्सेस, ओके? ये आगे पीछे हो जाए तो डजेंट मैटर। HOA जो कि यहाँ पे लिखा होता है ऑन द टॉप राइट हियर, HOA, राइट? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, उसका मतलब आपका ज़ीरो है, ठीक है? और अदर चीज़ें वो पूछ रहा है, तो अदर भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है? ये 10%, 5 ये हम रखते हैं ऑलवेज, क्योंकि हमारा एक्सपेंस होता है प्रॉपर्टी को चलाने का, ठीक है? जो बंदा इसको रेंट लेके आएगा वो मेंटेनेंस कंपनी होती है, और घर में अगर कोई बड़ा खर्चा आ गया, आई डोंट नो कि रूफ लीक हो गई, बेसमेंट लीक हो गई, तो फिर हम कैप एक्स वाले पैसों में से निकाल के उस गुल्लक को तोड़ेंगे, उसमें से पैसे निकलेंगे, उस पैसों से चीज़ें फिक्स करेंगे, ठीक है? तो ये हमारा कैलकुलेशन आ गई। ये कैलकुलेशन फिर भी रहती है जो कि रेंट है, ठीक है? हमें रेंट मिलना लाजमी होता है, तो रेंट के लिए हम जाएंगे रेंटल एस्टिमेटर, ठीक है? हम इसको कॉपी करेंगे, इसके प्रॉपर्टी को वापस रखेंगे, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल डाल दो और उसको ओपन कर दो, ओके? तो जब आप इसको ओपन करते हो हियर, तो ये आपको रेंट बता रहा है 1167 का, ठीक है? 1167 का आपको रेंट बता रहा है। मगर हम इसका फ़ौरन से ये रेंट नहीं लेते हैं, हम नीचे जाते हैं, एक्टिव रेंटल्स को हम हटा देंगे, चेक ऑफ कर देंगे, ताकि हमें सारे रेंट्स हट जाए जो अभी रेंट पे चढ़े हुए, हमें वो नहीं चाहिए। जो रेंट पे अभी अभी चढ़ गए हैं वो हमें चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जो चढ़ने के लिए बैठे हुए वो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है? एनी डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस 1 रखना है,
اور ہم نے اوکے کر دینا ہے. 1 مائل کے ریڈیس میں 1 مائل کے ریڈیس میں جو گھر ہے ہم نے وہ دیکھنا ہے. اب ہمیں ہمارے گھر پہ آ جانا ہے. ہمارا گھر ہے 3 بیڈ 2 باتھ کا, تو ہم ڈھونڈیں گے یہاں پہ 3 بیڈ 2 باتھ. ٹھیک ہے, ہم نے 3 کر دیا یہاں پہ کم سے کم, سو سارے 3 بیڈ 2 باتھ والے ہمارے گھر دکھیں. تو یہ سارے 3 بیڈ 1 باتھ 3 2 3 1 3 2 رائٹ ہیئر. رائٹ, یہ گھر 3 2 کا ہے. Let's see if we go back, is there any 3 2 3 1 3 1 3 1? They're all 3 1. Okay, تو ٹیکنیکلی یہ سارے 3 1 ہیں جو جن کے رینٹ کم ہے. ہمارا رینٹ 1167 ہے اور ہم 3 2 ہیں. ہمارا برابر والا گھر جو گیا ہے وہ 3 1 پہ گیا ہے اور وہ 1200 پہ گیا آلموسٹ. یہ بھی 1200 پہ گیا ہے. یہ 3 2 ہے, یہ 1250 پہ گیا. تو آئی گیس سیف ٹو سے دیٹ وی کین ڈو 1180. ٹھیک ہے, ہمیں تھوڑا سا زیرو والے سے زیادہ لینا ہے. 1180. ٹھیک ہے, ہمارے پاس رینٹ آ گیا, ہمارے پاس ٹیکسز اینڈ انشورنس آ گئے. ٹھیک ہے, اور ہم نے یہ پیسے کاٹ دیے رینٹ میں سے. ٹھیک ہے, تو اب جو بھی ایکویشن آئے گی ہم اس میں سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب جب بھی ہم پرچیز پرائس کرتے ہیں ہم 10% ڈاؤن کرتے ہیں, تو یہ 4.25 ڈاؤن ہے, تو یہ کم ہے. اور 10% کے لیے میرے پاس 22,000 ہمارا ہوگا 10% ڈاؤن. ٹھیک ہے, ایمورٹائزیشن ہم نے چینج کر کے آئی ڈونٹ نو 30 ایئرس سے آپ اسٹارٹ کر لو, 30 ایئرس پہ دیکھ لو. اس سے ہوتا یہ کہ کتنے, ایمورٹائزیشن کا مقصد ہوتا ہے کہ کتنے سالوں میں آپ پے کرو گے. ٹھیک ہے, تو 30 سال اگر آپ $550 سے اس کو پے کرتے گئے 30 سال تک, تو گھر کے پورے پیسے ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو بٹ ہم یہ کرتے نہیں ہیں, ہم 30 سال نہیں لگائیں گے. ظاہر ہے ہم ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں جس کو بولتے ہیں بلون. تو 7 ایئر کا بلون, جیسے بلون ہوتا ہے نا, بلون میں ہوا بھر گیا, اس کو پھاڑو تو ساری ہوا نکل جاتی ہے. تو اسی طرح جب بلون پھٹتا ہے تو سارے پیسے ڈیو ہو جاتے ہیں اس وقت, جس وقت اس وقت ڈیو ہو جاتے ہیں جتنے بھی ریمیننگ پیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, پراپرٹی کے. تو 30 ایئرس کی ایمورٹائزیشن کا اس مقصد یہ ہوتا ہے کہ 30 سال تک اگر ہم یہ پیمنٹ کرتے رہیں تو وہ ہم پے کر سکتے ہیں. اوکے, alright, so coming back to this, $22,000 ہمارا ڈاؤن پیمنٹ ہو جائے گا. 30 ایئرس کی ایمورٹائزیشن, آئی تھنک وی مائٹ ہیو ٹو برنگ اٹ ایون بگر, 200 something. Yeah, so I think this is what we might need to do. اس کو آپ کر دو 20,000 تو 17 پہ آ جائے گا. یا تو 20,000 کی ڈاؤن پیمنٹ, $277 per month, اور that's it, right, اور 6 year amortization. So basically میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں, آپ نے کیا چیزیں اس کو بھیجنی ہے. Okay, let me send you a screenshot on this. ہم نے پہلے بھیجنی ہے پرچیز پرائس. ٹھیک ہے, ڈاؤن پیمنٹ بھیجنی ہے اور منتھلی پیمنٹ بھیجنی ہے. یہ کس پراپرٹی کی, اس پراپرٹی کی جس کا آپ نے مجھ سے کوشچن کیا تھا. Send him these numbers. Okay. Okay guys, hopefully this was easy. I'm working on a detailed video on this. Okay, detailed video. Inshallah I'll have it done very soon, and then آپ بس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں, step by step follow کر سکتے ہیں, and then you'll be fine. Okay, I guess that's about it guys. I will see you guys tomorrow inshallah. Hussein, I did get your messages. I will have a look at them tomorrow, but basically run the number and send the seller finance offer on it. Hamza said, got it. Said, if we have a portfolio of one seller, can we only move 1 to 3 portfolio at a time? Yeah, you can. بیسکلی دیکھیں, اس پہ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سیلر کو کنونس کرتے ہیں, رائٹ.
سیلر ظاہر چاہتا یہ کہ میری ساری پراپرٹی ایک ساتھ بک جائے، بٹ آنیسٹلی اس مارکیٹ میں یہ ہو نہیں سکتا، رائٹ؟ بہت زیادہ لائبلٹی ہے اتنی ساری پراپرٹی کو ایک ساتھ اٹھانا، اس میں سے، اور پلس اگر اب آؤٹ آف اسٹیٹ انویسٹر ہیں، جو 90% آف دا انویسٹرس آؤٹ آف اسٹیٹ ہوتے ہیں، ان کے لیے اور مسئلہ ہو جائے گا. سید بھائی، جی جو میں نے آپ کو لنک سینڈ کیا، سوری یہ آف مارکیٹ تھے، ایک آن مارکیٹ پر ہے اور جو دوسرے ہیں وہ آف مارکیٹ پر ہے. انہوں نے مجھے کچھ لنک سینڈ کیے، تو آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں کہ آگے بات ہو سکتی ہے نہیں. شور، اس پہ صرف کیش ہی کرنی ہے؟ ہاں وہ صرف کیش ہی مانگ رہا ہے کیونکہ وہ صرف فائنینس ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آپ کیش آفر دے دیں اس کو. دیکھیں کیش کا اس کو بھی پتہ ہے یہ بات کہ جب بھی کیش اس کو ملے گی تو 70 سینٹس آن دا ڈالر ملے گی یا 60 سینٹس آن دا ڈالر. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں $1 دے گا، ہم واپسی میں اس کو 60 سینٹس دیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرچیز پرائس کو آپ 0.60 سے ملٹیپلائی کر رہے ہو بیسکلی، رائٹ؟ تو اس کی آپ کو پرائسز پتہ ہے سب، یہ ساری آف مارکیٹ ہیں تو اس کی آپ کو پرائسز وہ کیا مانگ رہے ہیں پتہ ہے؟ وہ جو مینشن ہے وہی اس پر بات نہیں، جو تمام مارکیٹ پر جو تھا نہیں اس پر بات نہیں لسٹ ہے. وہ کہہ رہے کہ میں ہر مارکیٹ پر 10 دن کی ریلیف دے سکتا ہوں اور نہیں دے سکتا. نہیں، یہ تو ایسٹیمیٹ آ رہا ہے نا، یہ تو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہے زیلو. اگر آف مارکیٹ ہیں پراپرٹیز تو آپ کو پوچھنی پڑتی ہیں کہ بھائی پیسے کتنے مانگ رہے ہو اس کے، رائٹ؟ کیونکہ وہ کہیں لسٹ نہیں ہے. یہ سب زیسٹیمیٹ زیلو بتا رہا ہے آپ کو کہ بھائی اتنا ہو سکتا ہے. یہ ساری آف مارکیٹ ہے، رائٹ؟ اوپر لکھا ہوا ہے آف مارکیٹ. تو آپ اس سے پہلے پوچھو کہ ساری پراپرٹی کی پرائسنگ بتاؤ، نمبر 1. نمبر 2، ہمیں چاہیے ہوگی پکچرس ان سائڈ، کیونکہ اگر لسٹ نہیں ہے تو ہم پکچر نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی کس میں کتنا کام ہے، رائٹ؟ وہ بول رہا ہے ٹھیک ہے کہ ساری چیزیں نہیں ہیں، اٹس گڈ، بٹ آپ کو اپنی تسلی کے لیے پکچرس مانگنی ہوں گی، کیونکہ جب ہم آگے سیل کریں گے تو آگے اس کو ہمیں پکچرس دکھانی پڑے گی انویسٹر کو. ٹھیک ہے، تو پرچیز پرائز پتہ کر لیں، امیجز پتہ کر لیں، اور لاسٹ کام ہوگا آپ کا رینٹ پتہ کر لیں کہ رینٹ کتنا ہے ان سب پراپرٹیز پہ. ٹھیک ہے، ان ہاں چاروں وہ میں. تو میں بتا دوں گا اس کو، لیکن جو پوچھ لیں میں قسم کیا نا یہ مارکیٹ پر ہے، کون جس کو چیک کر لی کہ یہ کس طرح کا گھر ہے، اس طرح نہیں دیکھیں، دینا 3 بیڈ وہ 1، صحیح کہہ رہا ہے. یا تو 3 بیڈ 1 اٹس اے گڈ ہاؤس. ٹھیک ہے، اور یہ پراپر ہاؤس ہے، یہ کوئی اپارٹمنٹ نہیں ہے، تو نو پرابلم دیر. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، اوپر والا ہے. ہاں، نمبر 2 3-1، دس از آلسو اے سنگل فیملی ہاؤس. گڈ. دس ون 3-1 اگین سنگل فیملی ہاؤس. دس ون آلسو 3-1 سنگل فیملی ہاؤس. تو اس گھروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے تو سب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بس اندر سے کیا حال ہے وہ ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، وہ اس وجہ سے بھی کیونکہ ظاہر ہے اگر رینٹ پہ چڑھا ہوا ہے تو وہ لوگ پکچر تو لے نہیں سکتے رینٹرس کے رہتے وقت، تو ہمیں پکچر کنفرم کرنی پڑے گی. تو بس آپ پکچرس پوچھ لو، اور پوچھ لو کوئی میجر کام تو نہیں ہے جو کہ اس نے خود ہی بتا دیا نہیں ہے. تو پکچرس، رینٹ اور پرچیز پرائس آف مارکیٹ والی پراپرٹیز کی آپ کو مانگنی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ صرف کیش آفر دے رہا ہے تو دین وی جسٹ جو بھی انہیں پرائس بتائے اس کو ہم چیک کریں گے آن لائن کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط پرائس بتائے. مارکیٹ کا پکچر جو میں نے آپ کو چیک کیا اس کا، آن مارکیٹ کا ہاں 95K let me see، نہیں آن مارکیٹ کا چیک کیا. آن مارکیٹ جو سب سے پہلے میں نے آپ کو سینڈ کیا. ہاں ہاں یہ یہ والا. یا یہ رہی آن مارکیٹ. I think this looks like a leak to me, right؟ یہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے، so it might be a work. Basement, it's fine, I guess. We don't need too much. Yeah, there's something wrong here. I feel like it might be a leak somewhere. تو یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ بھئی گھر میں کیا کام ہے. اس نے اس گھر کے بارے میں کچھ بتایا کہ کیا مسئلہ ہے؟ نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ 85 پر میں آپ کو دے سکتا ہوں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، اس بٹ نے اتنی کہا، اندر اس کے گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نے اتنا نہیں پوچھا، ابھی میں اس کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کیا سین ہے اس کا. بالکل. تو آپ دیکھیے بیسکلی جیسے آپ کو گھر ملے نا، سب سے پہلا کام ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیش آفر دیں یا سیلف فائنانس. ٹھیک ہے، سیلف فائنانس اس نے خود ہی منع کر دیا، تو پھر بچا کیش آفر. ٹھیک ہے،
کیش آفر سنتے ہی آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ بھائی کیش آفر والی پراپرٹی میں مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں کام ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو میں 0.7 والا فارمولا لگاؤں گا, اگر کام ہے تو پھر میں 0.5 یا 0.6 والا فارمولا لگاؤں گا. دیٹس اٹ, رائٹ. اچھا, اگر صحیح. سیلر فائنینس میں وہ اوکے کرتا ہے تو آپ سیلر فائنینس کا چھوٹتے ہی آپ سوچیں گے کہ بھائی اس گھر میں کام نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, یہ پراپرٹی رینٹ ریڈی ہونی چاہیے, تبھی سیلر فائنینس میں اس میں کر پاؤں گا, ٹھیک ہے. مگر اگر کیش ہے تو ہمیں دونوں آپشن کھل جاتے ہیں, یا تو ہم خراب پراپرٹی کو بائی کریں 0.5 کر کے, یا بہت اچھی پراپرٹی کو بائی کریں 0.7 کر کے, یا ویریشنس ہو سکتی ہیں. کبھی آپ کو 0.6 بھی کرنا پڑے گا, کبھی آپ سوچو کہ یار یہ گھر تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے, مجھے اتنا برا نہیں لگ رہا, بس یہ پینٹ کا مسئلہ ہے فار ایگزامپل, اور یہ باتھ روم کا میں خیال سے نو یہ ٹیپ نہیں چل رہا, تو یہ 10,000 کا کام ہوگا مشکل سے پینٹ کا اور سب ملا کے, تو ٹھیک ہے. مگر اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ مولڈ ہے, رائٹ, بلیک مولڈ, وچ مینس لائک اس پہ اگر کوئی آ جائے تو بہت بڑا لا سوٹ ہو جائے گا ہم پہ کہ ہم نے پراپرٹی بیچ دی, رینٹر کو رکھ دیا اندر بغیر اس کو فکس کرائے, رائٹ. اس سے یہ بلیک مولڈ آپ کے نوز میں چل جاتا ہے اور آپ کو کینسر دیتا ہے, لنگس کینسر وغیرہ, تو اس کو ہم نے صحیح کرنا ہوتا ہے. تو بیسیکلی باتھ روم تو پورا آپ کا صاف کرنا پڑے گا انلیس کہ اس نے آلریڈی کر دیا ہے, ٹھیک ہے, دیٹس ڈفرنٹ سینیریو. تو اس سے تو آپ یہ کا میں اس کو مینشن کر دوں گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10,000 دے رہا ہوں, لیکن یہاں پر لیکیج مسئلہ ہے اور یہ مسئلے ہیں, ہاں, اس سے بولو دیکھتے ہیں کہ وہ 10,000 کیا تو نہیں. صرف باتھ روم ہی لے جائے گا آپ کا. بولو 10,000 میرے تو صرف باتھ روم میں لگ جائیں گے, باقی آپ کے باتھ روم میں لیک دکھ رہی ہے مجھے اوپر کا ایشو دکھ رہا ہے, اس کا روف کا ایشو دکھ رہا ہے, رائٹ. اسے روف کا بھی پوچھ لو, مطلب اندر والی روف کا تو ایشو ہے, آن دا ٹاپ روف کا بھی ایشو ہو سکتا ہے کہ اس نے چینج نہ کری ہو, رائٹ. Just quite a few things that we need to look at. 10,000 وہ بولنے کے لیے تو کر رہا ہے, بٹ اس کو یہ بھی بتاؤ کہ پراپرٹی کتنے دن سے لسٹ ہے, رائٹ. 99 days on the market, جبھی تو کوئی بائی نہیں کر رہا اس کو, رائٹ. اور کوئی اس نے پرائس کٹ خود بھی نہیں کرا ہوا, تو کوئی بائی کرے گا بھی نہیں. تو آپ بیسکلی اس کو 50% آف کی آفر دو, 2-3 چیزوں سے کو دھیان میں رکھتے ہوئے. ایک تو 10-20 ہزار کا تو خرچہ صرف کچن, کیونکہ کچن میں بھی کوئی اپلائنسز نہیں دکھ رہے, رائٹ. کوئی فریج نہیں دکھ رہا آپ کو, کوئی اسٹوو نہیں دکھ رہا, اور اس میں اتنا بڑا ہول بھی ہے, اور ہاؤ ڈو آئی مس دیٹ, رائٹ. تو اس میں اس پراپرٹی میں کافی کام ہے. یو پرابلی ہیو ٹو ڈو لائک 50% آف, رائٹ. اور اس کو بتاؤ, آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اسکرین شاٹ لے لو ان چیزوں کا اور اس کو بھیجو, اس کو بولو کہ بھائی 10,000 کا تو مجھے یہ کام لگ رہا ہے, پھر بیسمنٹ کام, پھر یہ مسئلہ, پھر آپ کی روفنگ کا مسئلہ, کافی مسئلے ہیں اس میں, رائٹ. اور 99 days on the market, رائٹ. یہ 3 مہینے سے زیادہ کا ٹائم لگا ہوا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے انویسٹر نے دیکھا ہوگا اور وہ پیچھے ہٹ گیا کہ یہ پرائس اس کی میک سینس نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. صحیح. اٹ از مینشن برانڈ نیو روف, تو روف کو آپ چھوڑ دیں, بس جو چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں واش روم وغیرہ کی, اس کو آپ دیکھ لیں, انلیس کہ وہ بولتا ہے کہ وہ سب ٹھیک ہے. یا تو آپ اس سے کوشچن پوچھیں, اس سے پوچھیں کہ بھائی باتھ روم میں پینٹ میں مجھے کام دکھ رہا ہے, از اٹ اولڈ پکچرز اور از اٹ نیو پکچر, تو وہ آپ کو بتائے گا, اینڈ دین اس سے کمیونیکیٹ کریں. بٹ اگر 99 days آن دا مارکیٹ ہے, اس کا ایزلی مطلب ہے کہ یہ پراپرٹی 70 سے زیادہ کبھی نہیں بکے گی, ٹھیک ہے. ہم اگر اس سے 95 لگی تو آپ اس کو 50% دیں, تاکہ ہم پھر وہاں سے تھوڑا بہت اوپر آ جائیں. صحیح ہے. اوکے, پرفیکٹ. Let's see, is there any other questions? Check DM. Sure, I can check DM. Okay. Yeah. So this one property, I sent you the numbers, right? This property کے numbers میں نے آپ کو بھیجے. 150 وہ منع کر رہے ہیں نا, تو آپ اس کو چھوڑ دو, اس کو بولو ٹھیک ہے آپ 150 نہ لو, میں آپ کو اس سے اچھی آفر دیتا ہوں, جتنے مانگتے ہیں پیسے میں اتنے پورے دیتا ہوں,
ठीक है, but with a payment plan. तो उसको बोलो no problem at all, I have another offer for you, and then give him the seller finance. This one you said the kid is 1618. Quick question, hey kids, इसने क्या बोला है kids? Quick question, as we work through this, given the title will be transferring, how do you generally handle the mortgage acceleration clause? I want to make sure my clients are fully informed and are ready to move forward. So वो पूछ रही कि किस तरह mortgage का clause होगा, monthly payment, तो उसका मतलब इसका mortgage है. So I think we might need to call and explain this to them. 6 7. इसको email पर नहीं समझा सकते. I think it'll be tough. Okay, let me call her. I don't know if I've called her before. Hi, if you record your name and reason for calling, I'll see if this person is available. Buyer of Well House Drive. आपने इसको अपना नाम I think James आपका नाम है. Thanks. Please stay on the line. Hello, this is Candace. Hey Candice, this is Syed. We were looking at, I think you've been speaking to James as well on the Well House Drive property. Uh-huh. You kind of ask how the client will be protected for the due on sale clause, correct? Yes. Yeah, I was just thinking to just give you a call and explain rather than writing a whole email. So basically, how we do the takeovers is that we basically open a trust and on the name of the property, and the property will be moved into the trust, and we buy the trust off of you. You will still be, Mr. Seller will still be a part owner of the trust, just in case if we ever default, the trust ownership will revert back to the Mr. Seller 100% without any foreclosure process. Okay. Yeah. So plus we also forfeit our rights to get the deposit back that we have given, for example, down payment, as well as the monthly payment. So essentially, at the end of the, if we were to default, which we don't, but if we were, they will just win a lottery, get everything back, plus the payments we have made along with the down payment. Okay. Well, currently, I don't think my sellers are able to move forward. With the payments being what they are. Okay. Because it won't cover their mortgage. Okay, so yeah, so that's the other thing. Our assumption was that there was no mortgage. But if there is a mortgage, then we do and we will have to bring in enough to cover the mortgage no matter what, right? Then it wouldn't be a deal for either of us. Right. So Okay. in that way, I would need to know what sort of payments they are paying so I can kind of run the numbers and see what we can do in that. Okay. Let me get with them and then I will. Yeah, so if you can just reply back to the same chain of the threads we have been talking, that would be great. Mm-hmm. All I would need is sort of understand the interest rate that they got and the payment, and the monthly payment that they're doing, and whatever is left over, we might structure it as in like we'll pay the Mr. Seller and the bank, so that whatever the Mr. Seller equity they have right now in the house, we'll pay that off in a small monthly payment along with covering the mortgage on top of that. Right? Okay. Well, Okay. let me get the information and then I'll get it to you. Sounds good. I appreciate it. Okay. Talk soon. Thank you. Okay.
Yeah, so just follow up on the on the offer, um, Hamza. Just so three things we need. I guess I told her two things, but technically it's three things, which is the loan balance, which is not very important. It gives us an idea how much seller equity there is. The interest rate, what they got as an interest, and the monthly payment, how much they are paying monthly to the bank, and then we will go from there. Okay. Cody, yes, Cody just texted me. I'm on the call. I'll give you a call back. What did he say? Cody, I'm taking another call right now. Okay. So he's saying he's taking another call. As soon as he's done, he will give me a call and we'll go from there. Yeah, Hamza, you just follow up. All right, guys, I'll see you guys tomorrow, inshallah, and we go from there. I think tomorrow is gonna be Friday. Yeah, so happy Friday for you guys already. Inshallah, we'll see you guys tomorrow. Bye for now. Okay, let me hang up here. Okay, so my class is done, guys. I will stay here for a few minutes. If you have any questions, please let me know. I'll try my absolute best to help you out right now, okay? Okay, let's see what we have in terms of questions on TikTok first, because I always miss them. TikTok के questions किधर हैं? I can't find any questions on TikTok, guys. Uh, Gold buy now, TP link in the bio. I don't know whatever he's saying. If anyone wants to buy a house, how would they do it? They would buy a house by going to Zillow and just giving them offer. Okay. What else? What else? Yeah, so I don't see any questions in TikTok, guys. For people which are three or four of them, if you guys have any questions, let me know how we can make money with the real estate right here. For YouTube, two people watching, guys, ask me questions, okay? Ask me new beginner questions. I can help you out, so you can make money or own real estate. I always want you guys to become investor. I don't want you to guys just buy and sell ahead, because जो property आप आगे बेच रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है हाउ मच मनी इन्वेस्टर्स आर मेकिंग. ठीक है, आपकी डील से, ये डील आपकी है और आप आगे भेज रहे हैं, एंड हाउ मच मनी यू आर मेकिंग. बट इट वुड नीड सम टाइम, आपको थोड़ा टाइम लगेगा उस ओनिंग तक पहुंचने के लिए. बट इट्स अ वेरी 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 गुड डील. ठीक है, अभी जो है यूएसए, अभी जो दुबई का एक वक्त आता था कि दुबई में everything, prices are going up, people are good. Dubai is going down, right, because of the war. Next best place property खरीदने के लिए और invest करने के लिए would be USA, right? वो इस वजह से कि आपके जितनी भी सुपर पावर है उनमें सबसे बड़ा यूएसए राइट नाउ. तो ऐसा नहीं है कि यूएसए पे कोई अटैक हो सकता है, यूएसए की सॉइल पे कोई अटैक, ऐसा कभी नहीं होगा. So I think that would be the best place for you to invest right now. Okay. Yeah, that's pretty much it. I'll end the live here. I'll see you guys tomorrow. Bye for now. All right, YouTube. I will let you guys go to talk to you tomorrow, inshallah.